Good afternoon, participant. Am I audible on both the sides? Online participants, am I audible? Okay. So today we will be starting a new concept actually, right? Though it is a part of extended part of SPSS, but a new concept, though it has been covered under multivariate analysis, but slightly different from the previous technique. I have already shared two data sets and a case. So in the first part, we will be covering a data set that is related to time, right? That was the technology adoption model. And after that, I will be taking up a bigger case, that is the H-band, right? So first, we will discuss time. So I am sharing my screen. So screen is there. So since yesterday, some of you have told, should I start the video also? Video is required. Okay. Right. So already okay, right. So we will be discussing structure equation model. So as we have discussed, we will be discussing TAM. TAM is the full form is technology adoption model. Okay. So anyone, any idea about the TAM? Yes, anyone? Okay, related to online participants, all the data sets has been shared yesterday, right? So from yesterday data set, there was a data set with the name TAM, right? So the name of the data set that we will be covering today is data underscore TAM, okay? Right. So yes, any idea about TAM? Anyone? Technology adoption model. No idea? Okay. So TAM is related to intention to use technology, right? So here we are interested to know about the intention to use technology. It may belong to any field. It may be for the teaching purpose. It may be for the research purpose. It may be for any purpose. Even it may be for the shopping purpose also. So this is the technology adoption model. Now, let us discuss what are the factors that may affect intention to use technology. Any idea? हम लोग टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं? Ease. Someone has said ease. Obviously, ease of use. अगर ease नहीं होता है तो हम लोग धीरे धीरे इसको कनेक्ट नहीं करते. अब जैसे कल का ही सेशन हम लोग ने एसपीएसएस से किया था, अगर हम लोग डायरेक्ट कल वाला सेशन पाइथन से करते थ्रू साइकिट लर्न, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कोडिंग का इशू होता. बट एसपीएसएस बीइंग सो यूजर फ्रेंडली, तो वो इशू आपको नहीं हुआ था. तो दैट इज इजी टू यूज. एनी अदर थिंग दैट मे Pardon? No. Usefulness. The next one is usefulness. Right? Means whether we consider
that technology as useful or not. So obviously these two factors may affect intention to use technology. Is that okay? Suppose we, हाँ, देयर में भी, अब हम लोग जो पहला केस लेते हैं हम लोग बहुत सिंपल रख रहे हैं, देयर आर टू फैक्टर्स ओनली, इसी को लेके कर रहे हैं. फाइन, ओके. नाउ सपोज दिस इज द टाइम थ्योरी. बेसिकली यही दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. एक तो ये हो गया परसीव्ड यूजफुलनेस, और दूसरा क्या हो गया, परसीव्ड ईज ऑफ यूज. व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड परसीव्ड, क्योंकि अभी तक किसी ने अगर उसको यूज नहीं किया है तो देयर विल बी अ परसेप्शन कि हम लोग करने वाले हैं या नहीं करने वाले. नाउ दिस इज द मॉडल. अब इस मॉडल में इशू क्या हो रहा है, इंटेंशन टू यूज क्या ये ऑब्जर्वेबल है, सरफेस के ऊपर है या बीनीथ द सरफेस है? इट इज ए लेटेंट कंस्ट्रक्ट, इजंट इट? बिकॉज इट इज नॉट ऑन द सरफेस, राइट? सो हम, अगर हमसे कोई भी पूछे, जैसे पूछे कि जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कल्चर अच्छा है, इस पे डिस्कस करना है, तो क्या एकेडमिक कल्चर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनीवन, जैसे अगर हमको देखना है लखनऊ के एकेडमिक कल्चर पे डिस्कस करना, तो हम क्या देखेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक, उनका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है, कितने रिसर्च पेपर्स हैं, इस टाइप कितने प्रोजेक्ट्स आते हैं. सो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ एकेडमिक एटमॉस्फेयर. सो ये जो इंटेंशन टू यूज है, इट इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. इसी तरह इजी टू यूज या यूजफुलनेस है, ये भी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं. इज दैट ओके? सो सिंस दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कंस्ट्रक्ट्स और लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स. इज दैट ओके? राइट. नाउ सपोज दिस इज द थ्योरी. अब आप ये देखना चाहते हैं कि वेदर दिस थ्योरी इज ट्रू इन द एकेडमिक्स और नॉट, राइट? सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस मॉडल को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. तो अगर हम लोग इसको फॉलो करें, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, देयर इज अ थ्योरी, एक थ्योरी है, ठीक. इस थ्योरी को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कंफर्म दिस थ्योरी फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन और ओवरऑल. इज दैट ओके? हम इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं. तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको इन तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है, विच आर नॉट डायरेक्टली यूजफुल. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको हम लोगों ने नाम दिया INT, इसको हम लोग ने नाम दिया परसीव ईज ऑफ यूज, इसको हम लोग ने नाम दिया परसीव यूजफुलनेस, राइट? सिंस INT इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, यस, कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे या कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोविड की बात करें, तो कोविड क्या डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल था? देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जिसकी वजह से हम ये जज करते थे कि कोविड है या नहीं. अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिसर्च कल्चर अच्छा है, ये कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स कहाँ पे पब्लिश हुए, ठीक. सो इसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ेगी, कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी. ये इंडिकेटर्स INT को भी बनाएंगे, ये इंडिकेटर्स परसीव ईज ऑफ यूज को भी बनाएंगे, और ये इंडिकेटर परसीव यूजफुलनेस को भी बनाएंगे. इज दैट ओके? राइट. सो मान लीजिए हम लोगों ने सोचा कि इसके तीन इंडिकेटर्स हो सकते हैं. सपोज दिस इज INT1, INT2, और तीसरा क्या हो सकता है, INT3. इसी तरह परसीव ईज ऑफ यूज के भी मान लीजिए हमने तीन इंडिकेटर ले लिए, दिस इज PU1, PU2, PU3, यूज, सॉरी, PE1, PE2, PE3, और नीचे क्या हो गया, PU1, PU2 एंड PU3. ये हमने ले लिया. इज दैट ओके? राइट. अब एज ए रिसर्चर आपको क्या क्या करना है, एनीवन, एज ए रिसर्चर, अभी हम स्टैटिस्टिक्स की कोई बात नहीं कर रहे. एज ए रिसर्चर पहली चीज आपको क्या करना है, सीधे हमको मॉडल को टेस्ट करना चाहिए या कोई और चीज को टेस्ट करना? नहीं नहीं, वो दैट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस की बात नहीं कर रहे.
हमें करना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इसमें? देखिए अभी हम ईएफए पे लौट करके आते हैं। हमने आपको क्या बताया कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट, देयर इज ए थ्योरी, टैम, टैम मॉडल है। इसको हमको स्टैब्लिश करना किसी सेक्टर के लिए, राइट, या ओवरऑल हमको टैम को करना है। अब इसमें तीन तरह के कंस्ट्रक्ट्स आ रहे हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं। तो इन कंस्ट्रक्ट्स के को थ्रू हमने ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमने तीन तीन इंडिकेटर ले लिए, तीनों के, INT1, INT2, INT3, PE1, PE2, PE3, PU1, PU2, PU3। अगेन एज ए रिसर्चर, क्योंकि यहाँ पे या तो टीचर्स है या PhD स्कॉलर्स है, तो एज ए रिसर्चर क्या आपका पहला काम है, वॉट एवर योर डोमेन इज। यस, अच्छा चलिए बताइए, INT1, INT2, INT3 लिए कहाँ से गए हो? लिटरेचर रिव्यू से लिएगा। इसका मतलब यू आर हाइपोथेसाइजिंग कि आईएनटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, INT1, INT2, INT3। ठीक, सबको हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आती है। तो हम कोई भी चीज हाइपोथेसाइज करते हैं तो उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो पहला टेस्ट क्या होगा कि वेदर दिस इंडिकेटर्स एक्चुअली रिफ्लेक्ट दिस कंस्ट्रक्ट। हमारे लेने से कुछ नहीं हो सकता ना। तो पहला हमारे पास चैलेंज क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि वेदर दे रिफ्लेक्ट ऑफ। अगर आंसर यस आता है तो सेकंड स्टेज पे हम क्या करना चाहेंगे, हम इस मॉडल को कंफर्म करना चाहेंगे कि वेदर ईज ऑफ यूज एंड यूजफुलनेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंटेंशन, राइट। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि ईज ऑफ यूज का ज्यादा इंप्रेशन पड़ रहा है या यूजफुलनेस का ज्यादा इंप्रेशन पड़ रहा है। इज दैट ओके, राइट। सो हम आपको जो केस हम डिस्कस करने वाले वो हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे जस्ट यू पीपुल हैव सम आइडिया कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ओके, इसको पढ़ लीजिए। दिस केस इज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक, मार्केटिंग रिसर्च, राइट, बाय द नरेश मल्होत्रा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी केस। इस पे हम लोग इसके तो वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स। INT is intention to use, okay. So what was the model, technology adoption model, that individual intention to use, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, INT is determined by, right। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, वर्ड कौन सा यूज किया है, डिटरमिन। तो डिटरमिन इज ए confirmatory word और exploratory word, is a confirmatory word, right? So we want to confirm this theory। किससे डिटरमिन होता है, परसीव यूजफुलनेस, PU, एंड परसीव ईज ऑफ यूज। अब उसके लिए जो हम लोगों ने इंडिकेटर्स लिए, इंडिकेटर्स क्या लिए हैं, PU1 क्या था, it will it is a perception that it will increase my performance, it will improve my productivity, next क्या, it will enhance my effectiveness। perceived ease of use क्या था, easy to use, easy to become skillful, and learning to operate is easy। intention क्या था कि इनका प्लान है कि उसमें यूज करेंगे, नेक्स्ट वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कंफर्म है उनको कि यूज करेंगे, और उनका इंटेंशन भी है यूज करें। now these indicators may be challenged, लेकिन ये सिचुएशन क्लियर है, फाइन। so this is the scenario that we want to discuss here। अब अभी तक आप लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है फर्स्ट में, फर्स्ट वर्कशॉप में या सेकंड वर्कशॉप में, उसमें और इस कॉन्सेप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे कल हमने आपको एक केस पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया क्लस्टर एनालिसिस से, उससे हमने क्या निकाला था कि जो शॉपर्स होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड, दे कैन बी सेगमेंट इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1, शॉपहोलिक, शॉपिंग एवर्स, एंड रैशनल शॉपर।
इससे पहले जो संजय सर ने पढ़ाया था उससे क्या निकाला गया था कि उस पे इम्पैक्ट किन किन चीजों का पड़ रहा है। ठीक, पांडे सर का भी जो क्लास था वो भी उसी पे था, जैसे रिग्रेशन पे था कि किसी चीज को डिफाइन करने के लिए किन किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस लेक्चर्स एज ए कॉन्सेप्ट एंड दिस वन? क्या डिफरेंस? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोग थ्योरी डेवलप कर रहे थे। इज दैट ओके? चाहे आपने रिग्रेशन पढ़ा हो, चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा हो, चाहे क्लस्टर या आप और या इवन ईएफए पढ़ा था, आप लोग थ्योरी डेवलप कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, देयर इज ऑलरेडी अ थ्योरी, और इस थ्योरी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंफर्म करने जा रहे हैं। इज दैट ओके? तो आपको मालूम है कि दो तरह की स्टडीज होती हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव, आपको मालूम ही होगा। तो इट डील्स विद दैट पार्ट वेयर देयर इज अ थ्योरी, और इस थ्योरी को हमको क्या करना है, वी हैव टू कंफर्म। इज दैट ओके? राइट? So for that purpose we will be discussing structural equation modeling. So strictly this is a confirmatory technique. So जब भी हम लोग सेम अप्लाई करने का, सेम जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही ग्लैमरस टूल है, आप लगाएंगे तो पेपर पब्लिश हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट भी उसी तरह से करे जाते हैं कि अगर आप उसको स्टैब्लिश ना कर पाए कि व्हाई यू हैव यूज्ड सेम। तो सेम के रिलेटेड पेपर जब भी आपको लिखने हैं तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ थ्योरी। उस थ्योरी को कंफर्म करें। राइट? ईएफए के लिए ऐसा ऐसी थ्योरी नहीं चाहिए। ईएफए के थ्रू हम लोग क्या डेवलप करते थे, वी डेवलप अ थ्योरी कि जिसके थ्रू हम लोग फैक्टर्स को निकालते थे। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर है? ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम जहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने अपने 16 साल एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में गुजारे, तो हमको ज्यादा जो एग्जाम्पल याद आते हैं वो मैनेजमेंट के आते हैं। राइट? मान लीजिए हम लोग सर्विस क्वालिटी की बात करें, जैसे किसी बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, या आपने कार खरीदी, या आपने वॉट एवर जो सर्विस ली है, जूम की ही बात कर ले। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग मेजर करते हैं, सर्विस क्वालिटी मेजर करते हैं। राइट? कोई भी चीज होती है तो वो सर्विस क्वालिटी हम लोग देखते हैं। सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? हम लोग का इम्पैक्ट सर्विस क्वालिटी का किस पे पड़ता है? सेटिस्फैक्शन पे पड़ता है। राइट? अगर सेटिस्फैक्शन अच्छा होता है तो हम उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बार बार परचेज करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिपर्चेज इंटेंशन। अब जैसे फोन में ले लें, मान लीजिए हमारा OnePlus 3T का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो हमने क्या करा, जब OnePlus 9RT आया तो आई हैव बॉट दैट अगेन। मतलब हमारा इंटेंशन था कि अब दोबारा हमको फोन लेना है, तो हम कौन सा फोन लेंगे, OnePlus का लेंगे। उसी तरह जैसे जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं, अगर उनका सेटिस्फैक्शन होता है तो दे गो विद द रीपरचेज इंटेंशन। ठीक, अब इस रीपरचेज इंटेंशन का फाइनली इंपैक्ट किस पे पड़ सकता है? लॉयल्टी पे पड़ सकता है। इज दैट ओके? राइट? नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ने यहाँ पे जितनी भी चार चीजें एक ओवल में लिखी हैं, आर दे डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल? दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, सो दे आर द कंस्ट्रक्ट्स। इज दैट ओके? राइट? उसको करने के लिए हमको कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द सेकेंड थिंग। ओके? राइट? क्या हम इसमें रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं? बताइए, रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहे कि हम यहाँ पे रिपर्चेज इंटेंशन नहीं कर रहे हैं, हम इसी में रिपर्चेज इंटेंशन ले लेते हैं, और इन दोनों का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? लॉयल्टी पे पड़ रहा है। ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर्विस क्वालिटी। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से? सेकंड वाले मॉडल में सेटिस्फैक्शन भी है और रिपर्चेज इंटेंशन भी है। रिग्रेशन में दो डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते थे? नहीं ले सकते। इजंट इट? अब आप कह सकते हैं कि हम इसको ना यूज करें, हम एम एनकोवा यूज कर लें, दैट इज नोन एज कैनोनिकल कोरिलेशन। हम लोग कैनोनिकल कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, दैट्स ओके।
लेकिन कैनोनिकल कोरिलेशन भी सिर्फ एक ही लेवल तक वर्क करेगा। अगर हमको उसके आगे मूव करना है तो दैट इज अ मल्टी स्टेज रिलेशनशिप। तो मल्टी स्टेज रिलेशनशिप के लिए दिस इज नॉट द मॉडल। इसके लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक पैरेलल मॉडल यूज करते हैं, दैट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी भी है। जिन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पढ़ा होगा और स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग करे, दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी भी है एज पर द ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न। इज दैट ओके? राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, ओके, यस आदिल, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, ऑनलाइन वाले भी है। सो नाउ वी आर फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट, राइट। दिस इज सेम। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेशनशिप इन ए सीरीज ऑफ इक्वेशन, राइट। द वर्ड इज सीरीज ऑफ इक्वेशन, मीन्स सीरीज ऑफ डिपेंडेंस एंड interdependence relationship. Is that okay? Right? डिपेंडेंस भी हो सकती है और इंटरडिपेंडेंस भी हो सकती है। मींस डायरेक्शन वन वे भी हो सकता है एंड डायरेक्शन क्या हो सकता है, बोथ वे भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंस्ट्रक्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो रिलेशनशिप होती है किसके बीच में होती है? कंस्ट्रक्ट्स होती है दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लेटेंट कंस्ट्रक्ट आल्सो। ये आपको डेफिनेशन भी मिले, लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स आर हाइपोथेटिकल, unobserved. The important word is theoretical concept. Okay, so there must be some theory जहां से हमको ये constructs मिलते हैं, ठीक। Concept represented by some measured variable or the indicators, ठीक। ये चीज होगी जिसको हम मेजर करेंगे, जिसको हम सर्वे के थ्रू कर सकते हैं। फाइन, एंड द मॉडल इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरी। जो अभी हम लोगों ने एक तरह से बनाया था, दैट इज जस्ट a representation of a theory. सो ये हम बार बार मेंशन करेंगे। इन टेक्निक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग थ्योरी। इज दैट ओके? अब क्योंकि आप लोग ईएफए पढ़ चुके हैं, तो कई बार ऐसा हम लोग करते हैं कि जब कोई नई थ्योरी की पार्ट करते हैं तो आधा पार्ट हम ईएफए के थ्रू थ्योरी को डेवलप करते हैं, राइट। और सेकेंड हाफ के थ्रू हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू कंफर्म। ओके, सो थ्योरी आपको लिटरेचर से भी मिल सकती है। थ्योरी आपको अगर डायरेक्ट थ्योरी नहीं है तो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, ईएफए के थ्रू डेवलप करके, लेकिन आपको जस्टिफाई करना होगा, देन वी कैन डेवलप दैट आल्सो। इज दैट ओके? राइट। सो दिस इज द थिंग। अब नाउ सेम मॉडल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थ्योरीज। जैसा आपने देखा था, पहला क्या था? हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना था कि INT1 ये जो इंडिकेटर है, INT2, INT3, right? They are the indicators of INT, right? So this comes under measurement model. ठीक, यहाँ तक क्लियर है? This comes under measurement model. So we establish theoretical correspondence between indicator and the constructs. Is that okay? Right. So let us have this. हम लोग यहीं पे, ये हम लोग का बेसिक फर्स्ट केस है, तो इसके थ्रू कर रहे हैं, टैम के थ्रू कर। ओके, हम लोग वी आर डूइंग इट फॉर टैम। ओके, सो इसमें जो पहली चीज आ रही है, जैसे हम लोगों ने लिया इस PU के लिए, वी हैव कंसीडर थ्री इंडिकेटर्स, PU1, PU2, PU3, ठीक। परसीव ईज ऑफ यूज के लिए दिस इज PE1, PE2, PE3। INT के लिए भी हम लोगों ने लिए हैं INT1, INT2 एंड INT3। ओके, राइट। अब जैसे रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल एग्जांपल्स, आप कोई भी डिजीज ले सकते हैं। किसी भी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए यू गो विथ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ इंडिकेटर्स लेते हैं। जैसे कोविड के लिए ले सकते हैं, क्या क्या हम लोग के इंडिकेटर्स थे कि वॉइस, क्या कहते हैं, सिंपल कोल्ड होगा, कफ हो सकता है, राइट, स्मेल लॉस होगा,
right? Taste loss होगा. So these are the indicators. Is that okay? Fine. So in that manner, if you go with the different domains, you can find out what are the indicators possible that represent the things. Okay. अब जैसे मान लीजिए finance का example लें, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या देख सकते हैं कि कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है, कितना अमाउंट वो सेव करता है. तो दीज आर द सर्टेन इंडिकेटर्स जो उसको करते हैं. अदरवाइज दीज इंडिकेटर्स आर इजिली अवेलेबल अंडर द रिसर्च पेपर्स, उसके आप पुराने रिसर्च पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं. ओके. कन्वेंशन इज, ये जो कंस्ट्रक्ट होता है इसको हम ओवल से या सर्किल से शो करते हैं, राइट? कि ये जो भी हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको ओवल से या सर्किल से शो करते हैं. और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो मेजर्ड वेरिएबल्स होते हैं, उनको रेक्टेंगल से या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट ओके? क्लियर है? तो चलिए हम लोग, जैसे हम लोग परसीव्ड यूजफुलनेस की बात करें, तो दिस इज परसीव्ड यूजफुलनेस. ठीक. इसके तीन इंडिकेटर्स हो गए, PU1, PU2, PU3. ये तीन इंडिकेटर्स हो गए. थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा. ओके. सो थिंक अबाउट दैट एंड टेल मी what would be the direction of the relationship, right? Whether the relationship is from PU1 to PU or it is the opposite. Okay, so I am mentioning whether this will be purple or it should be red. Purple or red? Purple. All of you purple? What came first? PU came first or PU1 came first? PU come first, right? In order to define PU, you have taken certain indicators. So I am repeating my question, purple or red. Is that okay? Right? So here, since here we are confirming the theory, it should be from PU to PU1. What you have taken in EFA? EFA में direction क्या? In EFA, the direction was from purple to red. Sorry, purple was the direction, because in EFA, you have measured variables, right? And from that measured variable, you are developing the construct. Here, constructs come first. Now we are going in the opposite direction. So it should be from PU to PU1. Red should be there. Is that okay? In the same way, it can be from PU to PU2 and PU to PU3. Is that okay? Now, this cannot be fully reflected in PU1. Since it cannot be fully reflected in PU1, so there must be some error. There must be some measurement error. कुछ ना कुछ error तो होगी. In the same way, this PU2 cannot be fully expressed by the PU, right? So again, there will be an error. Fine? Is that okay? Right. So there will be some errors in all the indicators because they cannot fully represent the situation. In the same way, we can have PE. It again has three indicators: PE1, PE2, and PE3. And these are the errors. Okay. And here we will be having INT. Again, we have INT1, INT2, and INT3. Okay. And there will be errors. My question is, errors are observable or unobservable?
they are unobservable, right? क्योंकि errors हमको direct नहीं मालूम चल पाएंगे. Otherwise, also the notation that I have used is the circuit. Is that okay? Now, since these three constructs are the part of a model, so there is no harm in hypothesizing that they will be interrelated also. Okay, right? So this is known as measurement model, right? Where we are confirming the indicators as well as we are confirming whether they belong to the same part or not. Is that okay? Right. Now, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? Main objective was that this INT can be determined by PU and PE. This was the now I am not making the indicators. So what was our objective? That this INT can be determined by, this has to be confirmed by perceived usefulness and perceived ease of use. Is that okay? Right? So the direction arrow, now it is not both way, it is a unidirectional arrow because it becomes a dependence relationship. Further, there is no reasons not to believe that PU and PE may be related. कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमको यूजफुलनेस लगती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, इजिली यूज कर लेते हैं. या कोई चीज इजी होती है, देन वी कैन फाइंड आउट its usefulness also. Is that okay? Right? Again, since we want to determine INT from PU to PE1, right? Obviously, INT cannot be fully determined by these two constructs. So there will be an error also. There will be some error also. Is that okay? And this is known as structural model, or this is the theoretical model that we want to do. And these diagrams are known as path diagrams. Is that okay? Concept is clear, right? So just to show, I am showing you this. So this is the diagram. Is that okay? Right? So this is for the measurement model. Here we have three factors or three constructs: PU, PE, and INT. They are having interdependence relationship, and these are the indicators. Is that okay? ठीक, वन पे भी परेशान ना होइएगा बिकॉज सब वन आपको दिखाई दे रहा है, that we will be discussing later on. Okay, and this is the structural model, this is the theoretical model, that intention to use can be determined by perceived usefulness and perceived ease of use. Here we have one more error term, that is E. Okay, concept clear hai? Means what is the objective for which we are going to study this. Obviously, I have taken a very simple example, only one directional example, just to introduce the concept. But when we move to HBAT case, then you will be facing the multi-stage relationship. Okay, is that okay? Any question? So this SEM actually consists of measurement model and structural model. जो आज का टॉपिक था CFA, confirmative factor analysis, is used for establishing the measurement model, right? And for the structural model, we can use theoretical model or TAM. That is just the extension. Okay, clear hai sabko? Right. So let us discuss some concepts. Then we are moving for solving this case or solving this situation. So why we go for SEM modeling? So what are the strategy? The first one is the confirmatory modeling strategy. I have just suggested a time model. We want to confirm this for the education purpose. Okay. Ms. Nikita, the difference between measurement and structural model is, in the measurement model, we want to establish the theoretical correspondence between
construct and the indicators, as well as whether these constructs are correlated or not, or these constructs are interdependently related or not. In the structural model, this is our final model where we want to establish whether certain constructs may have impact on uh, a dependent like constructs. Okay, so let us put the name. हम लोग क्या नाम यूज करेंगे? ठीक, अगर हम लोग इस मॉडल की बात करें, सो अगर हम लोग नॉर्मल, इफ वी गो विद द नॉर्मल लिंगो, so service quality is an independent variable, isn't it? Now this is a dependent variable for service quality. But if we consider the relationship between service quality and repurchase intention, क्या इसको हम dependent variable बोलेंगे? Right? For the second relationship, it becomes the independent variable. In the same way, repurchase intention is a dependent variable for the satisfaction, but it becomes an independent variable when we consider the loyalty. Is that okay? So we don't use this language, don't use this lingo of independent variable or dependent variable. We use the term as exogenous or exogenous constructs or exogenous variables and endogenous constructs. So exogenous constructs are, exogenous means exterior. So exogenous means the thing that is being determined outside the model. Okay. And endogenous means interior, the things that is determined inside the model. Is that okay? Right? So we will be using the term exogenous and endogenous. ठीक? अगर आप इसको बहुत elementary language में बात करें, so for the exogenous constructs, arrows are going outside, and for endogenous, arrows are coming inside. Is that okay? So अगर हम लोग जैसे इसकी बात करें यहाँ पर, so perceived usefulness and perceived ease of use, they are the exogenous or endogenous? They are the exogenous, and INT is endogenous, right? In this model, service quality is exogenous and all these are endogenous because they are determined inside the model, right? Is that okay? So now we will be using these terms exogenous as well as endogenous. आप देख भी लीजिए, there are no arrows that are coming inside the service quality, right? The arrows, whether in the first model or in the second model, they are going outside. So they are the exogenous curve. Is that okay? Right. So, right. So the first one is the confirmatory modeling strategy. We want to confirm whatever the model that we have proposed that holds or not. So how well model fits the reality. Okay? So here we have used the word fits the reality. Model कहाँ से develop होता है? Theory से develop होता है. And reality is from, बोलिए. देखिए अब हम आपको मान करके चल रहे हैं, since you have attended a number of sessions, तो आप लोग stats के बहुत close है. तो reality कहाँ से आती है? Sample से आती है कि नहीं आती है? You collect the data. Means whatever you think from the theory should be reflected through the sample also. So here we test how well the model, how well the theory fits the sample. एक तरह का goodness of fit ही होता है. Fine. So the next one is, there may be more than one models also. So you will be comparing them, that which model is the best for that situation. So the second one is competitive model strategy. We are comparing the model. So obviously किस model को आप better मानेंगे? That have better fitness. Is that okay? And the last thing is, that is the ultimate thing, that we develop a new model, means we improve an old model or re-specify the model.
राइट. सो हम लोग का जो एक्चुअल रिसर्च होती है इसी तरह से होती है कि वी प्रपोज अ न्यू मॉडल और उसको एस्टेब्लिश करते हैं. द न्यू मॉडल इज बेटर एज कंपेयर टू ऑल द एग्जिस्टिंग मॉडल्स. इज दैट ओके? सो these are the three strategies that we will be discussing through that. Okay, right. And what are the stages? This is very important because whenever you write research paper on the same, since SEM has been used quite extensively in the recent 10 years because of the high computation power and as well as the number of software that are available. हर जगह आपको इसके सॉफ्टवेयर मिलेंगे. We will be discussing. So it is very important that how you write the things, how you write your work is very important. So that's why we are discussing the stages for the structural equation model. First, we define the construct. इसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, right? So obviously they are the unobservable one, they are the latent one. Then we develop and specify the measurement model. So here, what we do, we mention the indicators and establish the correspondence in between them. Then we estimate the model, right? That is the model, these are the coefficients, whether they are holding or not. And here we also assess the measurement model validity, whether the measurement model is there or not. So this part actually we will be covering through CFA. Obviously in the first part, that is from the theory, means it is from the literature review. This part also, a bit of this is from the literature review, right? Then we use the CFA. So once the measurement model has been established, right? It is very important. Once the measurement model has been established, right? So it gives the green signal to go to the second part where we discuss, we specify the structural model and assess its validity, right? Tools are approximately same. So that's why we will be concentrating much upon CFA. And then the second stage is just the repetition of CFA. Is that okay? So these are the stages that we'll be discussing in these slides. Any question? Any question? Fine. Okay. So the first thing is we define the constructs. As we have discussed earlier also, how we define the construct. Since constructs are the latent construct, so they come from the theory. But since they are not directly measurable, so we operationalize these latent constructs through some indicators, right? So what we do, we select indicators, right? And they are known as measurement scale items. Okay? So obviously the question arises, which type of scale you can use, right? Normally we can use all metric scale, means ratio scale, because finance people are also using quite extensively the same, right? We can use the interval scale also, and even we can use the ordinal scale also, right? Ordinal scale means where we have more than 4 categories. Is that okay? Even ये हम आप लोग को कराएंगे नहीं, even if the data is nominal in nature. So even for the nominal data also, if we use the dummy variables, then for the nominal data, it can also be, right? So broadly, obviously you have to use the different technique, but all type of scales may be covered under this. Fine. Okay. So the first thing is we develop and specify the measurement model. So we define the latent construct. Measured indicators are assigned to latent construct that I have already shown. What type of relationships are there? It may be in between construct to indicator, right? Next is structural relationship between construct. आपने देखा था, right? It can be the correlational relationship between different constructs where we use this bidirectional arrows. Okay, so these type of relationship that are there.
What are the errors? What are the measurement errors? Number one, they are related to individual indicator because no construct cannot fully define the indicator. So there will be an error with um, all the indicators, as well as for the endogenous construct. Endogenous construct means that is the determined construct that I have already shown that there will be an error in int also, because int has been is to be determined from these. Is that okay? Now the very important thing, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो in the diagram whatever things are specified, so that is free to be estimated, and things that are left, right, they are fixed to zero, they are not estimated. Suppose this is a construct A, this is the construct B, this is the construct C, this is the construct D. Okay, right. Suppose we have this. So when we run the model, so only these arrows or this relationship would be measured. Okay? Suppose we have increased this, that D can directly be determined by A. Right? So now how many relationships would be estimated? 1, 2, 3, and 6. Is that okay? Right? There is no mention of direct relationship from B to D, so it won't be measured. But if we have a mention, it would be estimated. Right? So in our path diagram, whatever things that we indicate would be measured, and all other things would be put as C. Right? So they are fixed as non-specified loadings are fixed to be zero. They are not estimated. Right? Fine. Okay, so now we come to the model estimation. The first is we always mention that the research design should be valid, research design should be comprehensive. Otherwise, an ill designed experiment normally fails. So in the research design, what things we discuss? We discuss the type of data, right? Whether we are considering the metric data or the non-metric data. So obviously tools may be different, the interpretation may be different, but we will discuss. Next, whether we are using covariance or correlation. ठीक? आप लोग को idea है the relationship between correlation and covariance. Okay. So my question is, just आप सोचिए whether covariance will be a better tool or correlation will be a better. Why? Because correlation is okay. और अच्छा आंसर. Basically, correlation is actually governed by the covariance, right? When we go for the correlation, एक तरह से we normalize that, we scale that in between -1 to +1. So obviously the differences got skewed. So normally we use, obviously we can use both. We go with the covariance base, right? So the MOS is based upon covariance based cell. Okay? इसीलिए ज्यादातर चीजें किस पे बनाई गई हैं? इवन आप लोगों ने देखा होगा for the factor analysis, the technique you have used is the principal component analysis. The principal component analysis is also based upon covariance, right? All the discussion in the finance when you consider the portfolio formation or the risk matrix is based upon the covariance also, just because of the things that things remain unskilled. So that is easier to be governed. Okay. Related to the scale or the measurement, there is no impact of the measurement. There is no need of standardization and there is no need of normalization when we consider this set. Okay. So units का कोई impact नहीं पड़ता. Right. The next is the missing data. Obviously, missing data has an impact upon the generalization.
Here for the missing data, we consider the two concepts, two things. Number one is volume of the missing data, and the other one is the pattern of the missing data. Obviously, if volume of the missing of the observations are high, it will be an impact upon generalization. In the same way, even the volume is not high, but they are non-random missing observation. So non-random missing observation means they are because of some reason, right? So obviously that reason may have some impact upon your analysis. So these two things are important. The next thing is how we handle missing data. The one method is we can impute. Okay, हम लोग क्या कर सकते हैं? We can impute by mean, median, or the trend, whatever the things are there, right? And the other thing is we consider the complete case analysis. Means even the missing observation is related to one variable only, so that case is deleted altogether. Okay, so there may be loss of the data, but it is always recommended that use complete case whenever we run this type of multivariate tools. All available approach is उसमें यूज करते, जो अवेलेबल है उसको हमने यूज कर लिया. मान लीजिए वी आर एग्जामिनिंग variable 3 and variable 4, and there is a missing observation in variable 6, so we don't bother. But in the all available approach, we delete that case even if there are some. Why this is important? Because here we will be using MLE estimation. So in that manner we can estimate missing observation also, right? Maximum likelihood estimation, the full form is. There are other approaches also जो analytics में बहुत use की जाती है, that is expectation maximization approach और EM approach. Okay, हम लोग जो भी data set practice कर रहे हैं उसमें missing observations are not there because we cannot cover everything. Fine, but this can be thick, so there are some alternative approaches also, like we can estimate the missing observation using MLE, or we can use expectation maximization approach. This is a large sample technique, sabhi ko malum hai, right? All multivariate is actually the large sample technique. Normal rule is, this is a thumb rule, not exactly rule, that we should have at least 10 observations per indicator, and for a better study, there should be 20 observations for each indicator. But obviously, large sample size agar hai to that is good, nahi bhi hai, even then we will be proceeding to that. For the sample size, this is important. If our data is not following normal, then we consider the asymptotically normal distribution. So obviously sample size, large sample size is required. Model complexity means a number of indicators are high, number of constructs are high, number of relationships are high. So this type of model is known as a complex model. The more the complex the model is, larger the sample size is required. What estimation technique we are using? MLE is actually based upon large sample technique, and MLE is the base, so estimation technique can also play some role, right? Right. So now we come to these concepts are important, so we will be discussing, then we will be going to the case, right? So, and we have full 3 days, okay? So related to the model estimation, what are the issues in the model estimation? First, we decide for every parameter whether there is a relationship that is to be estimated, or there should not be any mentioned relationship. Means for every relationship, we discuss whether it is free to be estimated, whether it is free to be estimated, or it is fixed to be 0. Fine, right? So for every relationship, we have to discuss whether we are considering it a free or fixed. ये decide कैसे करें? बताइए. ये decide कैसे करेंगे कि किसको हमको free रखना है, किसको हमको fix रखना? Obviously from some theory, right? So first, on the first stage, we go with the theory for the model confirmation. When you go with the model development, then even you can examine those relationships also which are earlier has been fixed to 0.
But in the start, we start with only those relationships that are being mentioned in some theory. Fine. So, right. So first, next are the estimation techniques. Here we are following covariance based SEM. So जो एमॉस बनाया गया है और जो most of the popular software that are based upon covariance based, right? उसमें हम लोग covariance matrices के थ्रू करते हैं. बाद में हम आपको दिखा देंगे कि एक्सेल के थ्रू भी इसको आप कर सकते हैं बिना इसको यूज करें. ठीक. द अदर अप्रोच इज जो स्मार्ट पीएलएस यूज करता है, that is a partial least square, right? उसमें they start directly with the construct and they determine the partial least square estimation. So these are the two parallel approaches. दोनों के अपने merits हैं and both are having demerits also, right? So anyways, we are going with the covariance based structural equation modeling. Here we will be using the approach of MLE, that is the maximum likelihood estimation. But there are other type of techniques also. Obviously, we are not discussing, but in future, if you require, we can use weighted least square, generalized least square, asymptotic distribution free techniques also. So all those students who have studied econometrics or statistics, they have some idea related to these techniques also. So my point is, MLE is not the only technique. Means there are some other techniques also, and for some other situation, different techniques can be employed. Okay, right. A number of computer programs are there, though I haven't mentioned smart PLS here, right? So the first program was given by Lizrel, right? So the first one was given by Lizrel. हमने इसी से सीखा था, but Lizrel is not easily available, so it has been faded out. Now the most popular one is MOS. There are other one also like EQS, MPLS. We have a well-defined package in R with the name Lavan. We also have a package in Python with the name of SameOpy, right? So you can use anyone. Okay, there may be some difference in the analysis. There may be some difference in the estimation. There may be some difference in the diagram also. At present, we are using MOS. Is that okay? Right? Any issue? Now, identification. When we teach our student the econometrics, then normally we take a full chapter on identification. बाकी participants के लिए identification की जरूरत क्या पड़ती है? हमको कोई भी solution निकालना है तो वो solution आता कहाँ से? It comes from some data, it comes from some information. So there is always a major question whether we have enough information is there so to identify a solution, right? Is that okay? Means we have enough information from the sample so that we will be getting a solution of. Okay? So there may be three situations जो हम आपको एक example के through discuss करते हैं. Okay. Now let us take an example. Suppose we have a factor, a construct. Okay. And we are using only two indicators, that is x1 and x2. Okay. And there will be error 1, there will be error. Is that okay? Right. Now, the first thing is we want the loading of this factor on x1, or you can say we want the regression coefficient from f to x1. Broadly, we require. So suppose this is being termed as lx1 and lx2. So lx1 and lx2 are unknown. They are to be estimated. Is that okay? Fine. In the same way, E1 and E2 are also unknown. So they are to be estimated. So now here, parameters to be estimated are how many parameters are to be estimated? LX1, LX1, LX2, E1 and E2.
So there are 4 parameters are to be estimated. Is that okay? Now, this is based upon the covariance. So from the sample, this x1 and x2 are the data, are the indicators, they are the variables, so they are having the data. So if we use the covariance matrix, we have 2 variables, that is x1, x2. Here also we will be having x1, x2. And here we are considering the covariance matrix. Okay? Fine. So इसमें क्या हो जाएगा? It would be the covariance of x1 and x1. So it can be named as variance of x1. Is that okay? Right? आप लोग comfortable हैं इस notation में? Otherwise we can write sigma 1 1 also. Right? Here also this is covariance of covariance of x2 with x2. So this is known as variance. Right? Variance of x2. This is covariance of, I am not writing covariance just to save the space. Here I am writing it as variance V1 of, or should I write covariance of x1, x2? Okay. Here also we will be having covariance of x2 and x1. You people know that covariance of x1 and x2 and covariance of x2 and x1 are the same thing. So here we are having covariance of x1 and x2. So how many unique terms are there? How many unique terms in the covariance matrix? This is variance of x1, variance of x2, and variance of covariance of x1 and x2. There are the 3 unique terms. ठीक? आप लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, NC2 का फॉर्मूला या PC2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. So it would be 2 into 3 divided by 2. There will be 3 only. Okay. So now here number of unique number of terms that are to be estimated, the parameters to be estimated are less than number of terms from where the estimation would be there. Right? Estimation हो पाएगा. एल्जेब्रा आ जाइए. अगर आपके पास 2 अननोन है और एक ही इक्वेशन, ठीक, सो क्या आप डिटरमिन कर पाए थे? नहीं कर पाते हैं. राइट? सो दिस इज नोन एज अनआइडेंटिफाइड और अंडर आइडेंटिफाइड. इज दैट ओके? दिस इज नोन एज अनआइडेंटिफाइड और अंडर आइडेंटिफाइड. फाइन. चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम. सपोज वी हैव दिस f1, this is x1, this is x2, and this is x3. Okay? E1, E2, E3. How many parameters are there? How many parameters are there? LX1, LX2, LX3. So parameters are LX1, LX2, LX3, E1, E2, E3. Right? So the parameters to be estimated are 6. How many terms are there? How many unique terms are there? आप लोग फॉर्मूले से निकाल लीजिए. फॉर्मूले से कितने आए? 6 आए कि नहीं आए? p plus 1 divided by 2, there are p are 3 terms है, तो 3 plus 4 divided by 2 कितना आ गया? 6. यहाँ आप देख भी सकते हैं variance of x1, variance of x2, variance of x3. This is covariance of x1, x2, covariance of x1, x3, covariance of x2, x3, right? और ये सब क्या हो गए? ये तो सेम हो गए. So we are not writing down the below terms. So here parameters are 6 and it is equals to number of terms that are given, number of unique variance covariance term, because this method is based upon covariance. Okay, it may not be the problem for smart PLS, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, that is the covariance base.
राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको बताना जरूरी था, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं एंड देन वी यूज, सो दिस टाइप ऑफ इश्यूज आर देयर. सो हियर number of terms equals to number of information, right? Number of unique information, right? So इस तरह की सिचुएशन को क्या कहेंगे? This is known as just identified. So this type of situation is known as just identified. Okay? ठीक. तो हम एस्टिमेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए. कर लेंगे? हमारा क्वेश्चन है, खाली हमको एस्टिमेट करना है कि ऑप्टिमाइज भी करना है? ऑप्टिमाइज भी करना है. व्हाई ऑप्टिमाइज? वी वांट सच सॉल्यूशन so that the difference between the observed values and the estimated value should be at least as possible. ऑप्टिमाइज कर पाएंगे? इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव फिक्स सॉल्यूशन. इज दैट ओके? लेकिन इससे आपको एक चीज मालूम चल गई कि फॉर एवरी कंस्ट्रक्ट नॉर्मली इंडिकेटर्स कितने लेने चाहिए? 3, राइट? 2 में भी कभी कभी काम हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड that you should have 3 indicators for each construct. So whenever you prepare the questionnaire and you are planning to run MOS, be very careful that you should have at least 3 indicators or 3 measurement scale items for each construct that is are to be determined. Okay, right? चलिए अब ये थोड़ा सा आप हमारी तरफ से करिए. Suppose these are the 2 factors. X1, both are having 3 indicators, X2, X3. ठीक. सपोज इसके हम लोगों ने क्या ले लिए? Y1, Y2 and we have one more indicator, Y3. Error components are E1, E2, E3, E4, E5, E6. Okay? How many parameters are to be estimated? सोच के आंसर दीजिएगा. How many parameters are to be estimated? बोलो, बोलिए. सोचा नहीं आप? How many parameters? No, not 12. प्रज्ञा. 20? 21 कहां से आ गए? Okay, so you have suggested LX1, LX2, LX3, LY1, LY2, LY3, right? So आप लोग लिख क्या रहे हैं? अभी तक यूज कर रहे हैं LX1, LX2, LX3, LY1, LY2, LY3, E1, E2, E3, E4, E5, E6. सब कवर हो गए कि छूट गया? Now, since I have introduced one more construct, and there is no reason to believe, obviously F1 and F2 are from the theory, they are the related term. So obviously, measurement model का rule क्या था? जितने भी constructs होंगे, we should explore whether they are having correlation among themselves or not. So here we require covariance of or correlation between F1 and F2, right? So कितने टर्म्स हो गए? 13, राइट? 12 तो आपने बताए थे. आप लोग कौन सा मिस कर गए थे? द कोरिलेशनल रिलेशनशिप. नंबर ऑफ यूनिक टर्म्स कितने हो गए? P+1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितने हो जाएंगे? 6 into 7 divided by 2, this is 21. हो जाएंगे? बोलिए. Right? So here, number of unknown parameters should be less than number of unique terms or the information that is available. So this situation is known as over identified. Is that okay? Right?
So whenever we run the model, पहली चीज हम लोग क्या चेक करते हैं? The first thing we check that whether our model is over identified or not. Is that okay? So only over identified model can be optimized. Fine. Clear है सबको? So here I have explained these concepts. Under identified means number of parameters are greater than number of units. So here no estimation. Just identified means estimation is there, but no optimization. And over identified is the situation that we look for. Here estimation is also there, as well as optimization is also there. Okay, clear? So our model must be optimized, must be over identified. हम आपको रन करके भी दिखा दें. Fine, clear? Okay. So now, अब हम लोग now we are moving to the our drawing board, and we will be drawing the structure. Oh, sorry, the CFA model. पहला मॉडल हम लोग ड्रॉ कर. Is that okay? Any question up to this point? Concepts are very important. That's why we are giving so much time on the cost. अदरवाइज तो आप YouTube में क्या देख लिया? आप YouTube बहुत सारे अवेलेबल है, आपको रन करने का तरीका आ जाएगा. एक दो बार गलत करेंगे, then even then you can run the MOS. Fine. Any question? Concept अभी तक का क्लियर है? Okay, so the data set that I will be using is, you can select data underscore time case. Okay, this is the data set that we will be discussing. Fine. So here, as you know, the sample size is 253, right? And number of variables or indicator are 9. So obviously 253 is much large as compared to the number of indicators. Fine. Okay. Now go to analyze. अब एक मिनट आप लोग पहले सुन लीजिए, all of you. Sometimes sometimes this MOS got compatible with the version of SPSS that you have. So MOS got embedded in the analyze, right? हो सकता है आपके सिस्टम में MOS उसमें डायरेक्टली embedded नहीं हुआ हो. So what you can do, right? आप क्या करेंगे? Go to the program. प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा ये आपको, you will be having IBM SPSS MOS. Okay, so here you should select MOS graphics. Right? आप लोग क्या select कर लेंगे? You should select MOS graphics. Okay, clear है? हाँ, यहाँ प्रोग्राम से सी ड्राइव. So either this MOS is there here, or you should go through the program. हो गया? So this is our drawing board. Fine. Okay, हम लोग स्टार्ट करें. All tools are available under analyze, right? So first check whether it is there under analyze. Okay, if you don't find MOS under analyze,
go to the C drive, and through the C drive, you can select IBM MOS and select MOS graphics. Okay. So from the C drive, आपको दिख रहा है, you can select MOS graphics. Okay. Graphics. Graphics means the drawing board. Okay. Now this is our, ये जो आपको white दिख रहा है, this is our drawing board. ठीक. Obviously it is in the portrait shape. अगर आपको इसको use करना, you can use this, right? Suppose you require a bigger board, right? So suppose you require a bigger board. इसको आप देख लीजिए, कभी जरूरत पड़ेगी. So go to view. Go to view. View, in the view we have interface property. This is the graphical interface, right? जिस पे हम लोग diagram draw करेंगे. So go to view and you can select the interface properties, right? In the interface property, like at present we are having paper size as portrait letter. आपको अगर change करना चाहे, you require a bigger board, so you can change it to landscape as the situation is. यहाँ जरूरत नहीं है. Just to show you, you can select landscape legal. अब आपने देखा, we have a larger drawing board. Okay, fine. या एक बार आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको मतलब ब्रेक करेंगे. इसके बाद आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा. आई विल बी रिपीटिंग दैट अगेन. सो एक बार इससे आप फैमिलियर हो जाएंगे. सो दिस इज आवर ड्राइंग बोर्ड. नाउ everything is there in this everything is there in this drop menu also, like diagram, draw, observe, draw, unobserved, zoom in, zoom out, everything is there, right? And these things are available in these buttons also, right? I normally prefer these buttons also, क्योंकि buttons आपको दिखाई देते हैं and they are easier to be handled. Related to this, हमने आपको बताया था, by default conventionally the square or rectangle represent the observed variables and oval or circle represent the unobserved, right? And this is the combination of both. देखिए इसके नीचे क्या लिख करके आ रहा है? If you read, draw a latent variable or and add an indicator to the latent variable. Is that okay? Right. So before going forward to that, हम लोग क्या करेंगे? We will connect our data set to this graphical space. आपको कुछ दिनों में ये चीजें याद हो जाएंगी. When you practice, when you go to this button, ये आप इस फाइल से भी ले सकते हैं, right? Go to this button. What this button reflects? Select data file, right? Select data file. आप कैसे याद कर सकते हैं? ये आपको दिख रहा है ना, डेटा फ्रेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Select data file, right? So आप क्या कर सकते हैं? You can select the file, right? Suppose this file name is in this folder. Here we will be selecting time case. Okay? जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ना, एक्सेल में करते हैं, in the same way we select the file name and we double click करके भी कर सकते हैं, otherwise we can click open. Okay? आपने जहां सेव करा होगा ना. Okay? So this is okay. Fine? Right? Now how you can check that this file is being connected to this graphic or not? यहां पर जाइए, इसका नाम क्या है? रीड करिए. लिस्ट वेरिएबल इन द डेटा सेट. आपको मालूम है आपके वेरिएबल्स के नेम क्या क्या थे? int1, int2, int3. इफ यू क्लिक दिस, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, right? We will be using this button later on. Fine? Okay? यहाँ तक क्लियर? Okay.
So now file has been connected. Obviously, unobserved things are unobserved, so they are not in this set, but all the indicators got connected to this graphical space. Fine. Now there are two methods जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं. पहले हम आपको एक लॉन्गिश मेथड बता रहे हैं. माय ऑब्जेक्टिव फॉर द लॉन्गिश मेथड इज जस्ट आप इस ड्राइंग बोर्ड से थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए, राइट. दो वी शुडंट यूज दिस मेथड जो हम लोग करने जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड, इससे इजियर मेथड अवेलेबल है, बट जस्ट दैट वी पीपल हैव सम आइडिया अबाउट द डिफरेंट बटन्स, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं. ठीक. तो सबसे पहले हम क्या ले लें, एक हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट. सो जितना बड़ा आप सर्किल बनाएंगे उतना बड़ा सर्किल बन जाएगा. ठीक. सपोज वी आर ड्राइंग ओनली टू अनऑब्जर्व वेरिएबल और टू कंस्ट्रक्ट. ये दो कंस्ट्रक्ट बना दिए. आप देख रहे दोनों का साइज अलग है. ठीक. इसको बाद में हम डील करेंगे. फाइन. आप राउंड भी बना सकते, इलिप्टिकल भी बना सकते. ठीक. स्क्वायर कभी नहीं बन पाएगा इससे. ओके, क्लियर है सबको. ठीक. अब नाउ सपोज इसको आप अभी देखेंगे, इसका हमको नाम रखना है. तो राइट क्लिक, राइट, और डबल क्लिक. यू कैन राइट क्लिक और यू कैन डबल क्लिक, राइट, कुछ भी कर सकते हैं. अब देखिए एक अननेसेसरली एक थर्ड भी, चलिए हम एक चीज और आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ दूसरी जगह क्लिक किया, सो वी विल बी हैविंग वन मोर unobserved variable that we don't require. So here you have erased the object. ये आपको दिख रहा है, सीजर दिख रहा है. Here we have erased the object, so you can erase the things also. Okay? So अगर कोई भी चीज unnecessarily बन जाए, so that can be erased. अब suppose you want to name this. Suppose इसको देखते चलिए ऊपर. Here we have object properties. In the object properties we have text. ठीक. So यहाँ पे variable name we have put as P. Clear? Now take the cursor to the another circle. देखिए वो रेड हो गया कि नहीं हो गया. Means now this is active, right? इस पे आपको जो भी क्लिक करना है, सॉरी, इस पे आप ले गए और आपने PE लिख दिया. वो सब फॉन्ट साइज वगैरह बाद में एडजस्ट कर दीजिएगा. Okay, okay, right. It would be better कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, right? Then you write the things. You can double click this. If you double click this, then object properties are directly there, right? Otherwise, you can use the right click. Here also object properties are there, right? In the object property, the first thing is the parameters. Sorry, first thing is the text. So what name you are putting? Suppose we put the name as PU. Fine. Now put the cursor here, right? And put the name as PE, right? PU is the short form of perceived usefulness. PE is the short form of perceived ease of use. आप पूरा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. हैंडल आपको करना है. ओके, यहां तक क्लियर. सो by this manner we can label either the construct or the indicators. ठीक. Now there are three indicators for PU. So हमने ये ले लिया and 1, 2, 3 indicators. इसी तरह 1, 2 and 3 ले लिया. Is that okay? Right? आप चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते थे, इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए. These are the three indicators. Now, आपको जैसे देखने से लग रहा है कि इसमें they are being shifted, so aesthetically they doesn't look good. So we have to move that. So इसमें move का ऑप्शन आपको ये बस दिख रही है, ट्रक दिख रहा है. ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रक का? लॉजिस्टिक. इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. हम इसीलिए ये वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको याद रहे कि किससे क्या काम किया जा रहा है. ओके, सो यू कैन सेलेक्ट द ट्रक
इस ट्रक से आपने इसको क्या कर दिया? ओके, आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत पास है, तो यू कैन इंक्रीज द, ओके, डन. Now you have to draw unidirectional relationship from the construct to the indicator, and this is the single headed arrow. आप देखिए इसको रेड करेंगे मतलब इट इज हाईलाइटेड. ये आपने जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, अगर आप ग्रीन से पहले छोड़ देंगे देन देयर वोंट बी एनी एरो ड्रॉ. ठीक. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन. राइट. एक बार फिर से द फर्स्ट वन शुड बी रेड. राइट. कहां तक ले जाएंगे? unless it become green means it becomes active, it becomes active. Okay, now we require a correlational relationship also. We require to draw covariance also. This is the sign for the covariance. Okay, is that okay? अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहां पे देखिए क्या है, चेंज द शेप. तो चेंज द शेप में आप इसको यू भी कर सकते हैं अगर आपका मन होगा. ठीक. फिर आपको लग रहा है ये जो एरोज हैं, एरोज इसके बीच में अननेसेसरली आ गए हैं, तो यू कैन टच अप ऑल्सो. ये टचअप दिखा आपको? राइट. आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको टचअप कर दीजिए. ओके. अगेन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बटन शुड बी यूज. राइट. बट जस्ट दैट कि आप इस ड्राइंग बोर्ड से, इन कमांड से यू विल बी समवॉट फैमिलियर. ये टचअप हमने इसलिए यूज किया बिकॉज इस डायग्राम को डायरेक्ट हम लोग रिसर्च पेपर में कॉपी कर देते हैं. राइट. सो इट शुड लुक्स गुड टू द आईज, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट रिसर्च पेपर में वी विल बी यूजिंग. तो जो डायग्राम बनेगा वो क्लमजी या क्लटरिंग नहीं होना चाहिए. ओके. राइट. ठीक. अगर आपको यू नहीं रखना है तो आप इसको अगेन क्या कर सकते हैं, आप इसको अगेन सब पे होगा. नहीं, इसलिए अब नहीं खिसक रहे क्योंकि आपने नीचे वालों को कर रखा है. लेकिन हम, अगर आपको खिसकाना ही है, देखिए क्या कर सकते हैं. लीजिए. राइट. अगेन दिस इज जस्ट फॉर फैमिलराइजिंग. अगर आप लोग कुछ चीजें इस पे नहीं भी कर पा रहे तो इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम्म. सब चेंज हो जाए. ओके. राइट. यहां तक क्लियर है? अगेन नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, चलिए अभी तक ये सब तो थोड़ा सा फन वाला पार्ट था. यू हैव टू, सिंस दीज इंडिकेटर्स आर फ्रॉम द, इंडिकेटर्स हमको कहां से लेने होंगे? एनीवन? they are the measured variable and there is an SPSS sheet for the measured variable, right? So for that purpose, इसको आप देखिए, you select list variable in the data set. ये variables आ गए. ओके. अब आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए. ऊपर देखिएगा PU1 is being select and it has been drag and drop. ठीक. PU2 is being selected and drop. ठीक है. सर हम लोग के पास कौन सा एक SPSS और है? मॉड्यूलर. In modular, SPSS modular also, all the tools, all the multivariate tools, all the analytics tools will be through this method only. You have to select and drop, right? And this is PU3, right? In the same way, PE1, PE2, and PU3 is there. Okay? Clear? Fine. Any question?
अगेन सिंस इसको हमको ड्रॉ करने में आपने देखा मच ऑफ द टाइम इज बीइंग वेस्टेड, राइट। हमारा इंटेंशन खाली क्या था, जस्ट टू फैमिलराइज यू, जस्ट दैट यू शुड डेवलप अ कंफर्ट विद दीज बटन्स। हम लोग इस तरह से कभी नहीं करेंगे। फाइन, क्लियर, राइट। सो आई कैन सेलेक्ट द न्यू वन, बट हम इसी ड्राइंग बोर्ड को वी आर यूजिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर मेथड जिससे आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े? सेलेक्ट दिस बटन। ओके, बिकॉज वी नो that we are using SEM, we are using CFA, so we will be requiring constructs as well as indicators both. So there is no point of drawing them separately. It is always better that to draw them simultaneously. So we have this option which has both the things. आपको देखने से भी लग रहा है visual display में that we draw a latent variable or add an indicator also. So we select this. अभी आप लोग रुके रहिएगा, ठीक। Now it is very important, the first circle or the first oval that you draw, इसके बाद के जितने सर्कल्स और ओवल्स होंगे, जितने रेक्टेंगल्स होंगे, they will be of that shape, right? So as per your complexity of the situation, we decide करते हैं कि हमको कितना बड़ा ड्रॉ करना है, right? So मान लीजिए हमने ये ले लिया, right? So अभी कुछ मत करिएगा। So only one कंस्ट्रक्ट इज बीइंग देयर। अब इसके बाद जितनी बार इसको हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, सो मेनी इंडिकेटर्स वुड बी ऐड, ठीक। हमने वन क्लिक किया तो इंडिकेटर ऐड हो गए, इंडिकेटर के साथ साथ क्या ऐड हुआ है, हम भूल गए थे लास्ट में हमको एरर को भी ऐड करना पड़ता, तो एरर के लिए हमको इस चीज की जरूरत पड़ती, मींस मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस मेथड। साथ में एरर भी ऐड हो गया। सेकेंड टाइम क्लिक किया द सेकेंड इंडिकेटर, थर्ड टाइम क्लिक किया the third indicator. There are three indicators, right? अब क्योंकि एक बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, there is no point of drawing again. अब बस एक बार क्लिक कर दीजिए, okay, right? So now we are having two constructs, each having three indicators, okay, and all the one directional paths are there. Fine. क्या चीज अभी बची है? You require a covariance, right? So you can draw from this, ठीक। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये आपको एक फिंगर दिखाई दे रही है, इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, ठीक। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, दे आर बीइंग सिलेक्टेड। देखिए आप कलर्स देख रहे हैं, कलर इज ब्लू। फाइन, नाउ गो टू प्लगइन्स, ठीक। इन द प्लगइन्स देयर इज एन ऑप्शन ड्रॉ कोवेरिएंस, राइट। फर्स्ट you should make those options active जो हमको करना है, then draw covariance, ठीक। कोवेरिएंस ड्रॉ हो गया। आपको इस शेप को थोड़ा सा अच्छा करना है तो आप क्या कर लीजिए, ओके, टच अप करना, यू कैन टच अप ऑल्सो। नाउ ऑल दिस थिंग्स आर एक्टिव, ठीक। अगर हमको डी सेलेक्ट करना है तो देखिए किसका ऑप्शन, डी सेलेक्ट। अगर आप नहीं डी सेलेक्ट करेंगे तो कुछ भी रोटेट करेंगे तो दे में बी रोटेटेड, ये हमने डी सेलेक्ट कर, इसको आप टचअप करके इसको अच्छा कर लीजिए, ओके। अगेन वी हैव टू राइट द नेम। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट वन इज पीयू, राइट। व्हाट इज द सेकेंड वन, दिस इज पीई, ओके। आपको इसको भी रब करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्टली यू मूव द कर्सर, राइट, एंड द थिंग्स आर बी फाइन, ठीक। नाउ यू, इसको आप इसी मेथड से करेंगे। नाउ यू रिक्वायर द वेरिएबल लिस्ट, ठीक। सो दिस इज द वेरिएबल लिस्ट, द सेम थिंग दैट इज देयर जो हमारे शीट्स में होता है, राइट। सो दिस इज PU1, PU1 is selected, drop, PU2 is selected, drop, PU3 is selected, drop, right? PE1 is selected, drop, PE2 is selected, drop, PE3 is selected and drop. Okay, suppose your indicator has a bigger name. एक तो कोशिश करनी चाहिए कि the indicator or the measure value should not have a big name, otherwise आपका ड्राइंग बोर्ड कम पड़ जाएगा,
इफ दैट इज फर्दर रिक्वायर्ड यू कैन गो टू प्लगइन्स। प्लगइन्स आपको दिखा हियर, यहाँ पे क्या मेंशन है, रीसाइज ऑब्जर्व वेरिएबल्स। तो अगर आप रीसाइज करेंगे हियर लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, तो उसने उसको स्क्वीज कर दिया। इफ मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, जैसे बड़ा सा नाम होता तो उसको क्या कर देता, इट विल एक्सटेंड। इज दैट ओके? अभी क्या बचा है, वी हैव टू नेम द एरर्स। सो वन मेथड इज, इसको करिएगा मत, डबल क्लिक दिस एंड राइट E1, राइट, डबल क्लिक दिस एंड राइट E1। सो ये तो छोटा सा मॉडल है, यू हैव टू राइट 6 टाइम्स, लेकिन अगर बड़े मॉडल में यू विल बी हैविंग अराउंड 20-30 एरर टर्म, सो इट वुड बी बेटर दैट गो टू प्लगइन्स। प्लगइन्स पे गया, प्लगइन्स में आपको क्या दिख रहा है, एरर ऑब्जर्व्ड है अनऑब्जर्व्ड, error is unobserved, so you can select name, क्योंकि this is not related to the data set, even we can do this for PU and PE। हमने PU को नेम क्यों करा है, because we want to use them for our theory। अगर हम उसको नहीं करते तो जितने भी सर्किल्स या ओवल थे सबको रीनेम कर देता, E1 E2 करके रीनेम करता। फाइन। So if you click name unobserved variables, all the error terms are being named in some sequence। इस पे आपको बॉदर नहीं करना, बस आपको मालूम होना चाहिए which one is E1 and which one is E6। ओके, बोलिए। बना लीजिए जो लोग बनाना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज अ बेटर मेथड। बाकी बहुत सारी चीजें जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते चले। फाइन। First, connect data set with this file। So how you connect data set? That is connected, right? You click the list variables, आपको ये दिख जाएगा, this is a variable window। Okay, if you haven't connected your data file with this, so आपको ये नहीं दिखाई देगा। Okay, right? Again, just to demonstrate जो हमने आपको पढ़ाया था, okay, क्लास, सपोज इसको हमने सेव कर लिया, हमने इसको सेव, आप लोग मत करिए, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक, हमने किसी नाम से सेव कर दिया, राइट। नाउ अब आपको जो भी एनालिसिस करनी होती, अगेन इट इज जस्ट टू फैमिलियराइज यू विद द डिफरेंट बटन्स। हियर वी हैव एनालिसिस प्रॉपर्टी, आपको दिख रहा है हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, कुछ सर्किल्स बने हुए हैं, राइट। सो दिस इज द एनालिसिस प्रॉपर्टी, क्लिक द एनालिसिस प्रॉपर्टी, राइट। what estimation technique is being used? Max, there are other techniques also that we are not, right? बूट स्टेपिंग वगैरह भी रहने देते हैं, गो टू आउटपुट, आपको आउटपुट दिखा, राइट। हियर वी हैव मिनिमाइजेशन हिस्ट्री, बस हम खाली एक को टिक कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट। ओके, ठीक, ये हमने इसको टिक कर दिया। ऑब्वियसली दिस डायग्राम इज नॉट एट ऑल एस्थेटिक इन नेचर, क्योंकि हमको यूज ही नहीं करना है, राइट। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, राइट, इट इज देयर इन द टूल्स ऑल्सो, राइट। ये आपको टूल से भी मिल जाएगा, टूल से सॉरी, ये एनालाइज से मिल जाएगा, कैलकुलेट एस्टिमेट, राइट। अदरवाइज हियर वी हैव कैलकुलेट एस्टिमेट, आप लोग बस ऊपर देखिएगा, वी कैलकुलेट एस्टिमेट, ठीक। यहाँ पे रेड बटन हुआ है, नहीं रेड बटन नहीं हुआ है, ठीक। हियर वी हैव द आउटपुट, ये आउटपुट का नाम क्या है, व्यू टेक्स्ट, क्या लिख करके आया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैंपल मोमेंट्स आर 3,
हाउ मेनी पैरामीटर्स आर टू बी एस्टिमेटेड, अभी हमने आपको एक्सप्लेन करा था 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑब्वियसली उसने लिख दिया है क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा रखा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो इसकी होंगी नहीं ना, मतलब नीचे क्या लिखा है, द मॉडल इज प्रोबेबली अनआइडेंटिफाइड, इन ऑर्डर टू अचीव आइडेंटिफिकेबिलिटी इट इज प्रोबेबली नेसेसरी टू इम्पोज वन मोर कंस्ट्रेंट, राइट। और आप कहीं पर भी जाएंगे, एस्टिमेट वगैरह कहीं पर भी जाएंगे, हर जगह क्या लिखा हो, राइट। सो इफ दिस इज द सिचुएशन, अगर ऐसी प्रॉब्लम, ये आपको कहां से मिला, नोट फॉर द मॉडल यहां से मिला। इज दैट ओके? ठीक। अब सपोज वी इंक्लूड वन मोर, ठीक, हमने इसमें एक और इंक्लूड कर दिया, राइट। और इसका नाम हमने यहां से ले आए, ये क्या था, PU3 ले आए, ठीक। और अगेन वी यूज प्लगइन्स, वी यूज नेम अनऑब्जर्वर, हो गया, इंक्लूड कर लिया। अब हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर, 3, फाइन, ठीक। हम लोग फिर से रन कर रहे हैं, फिर से ऊपर देखिएगा, अब रेड हो गया है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट पे जा रहे हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 हो गए। वाई? 6 टर्म्स आर टू बी एस्टिमेटेड, उसने करा भी क्या है, 6 ही तो है। सो मिनिमम जो भी वैल्यू थी उसको मिनिमम कर दिया, देयर इज नो ऑप्टिमाइजेशन, इसीलिए आप लोगों को काई स्क्वायर की वैल्यू 0 दिख रही है और कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा पा रही है। और एस्टिमेट्स भी सब क्या है, वो बिल्कुल फिक्स टाइप के आ गए। ओके, so this is not the case, फाइन, क्लियर है सबको? ठीक। अब इसकी जगह अगर हम लोग एक और ले रहे हैं, सो दिस इज PE1, PE2, PE3, ओके, और we put this name as PE, right, and use plugins, plugins are name unobserved variables, आ गया। So whatever things that we discussed in the theory, हम आपको demonstrate कर रहे हैं, and we require one covariance। हम plugin से भी कर सकते हैं, otherwise हमने कैसे कर दिया, we have drawn this, right, और इसको हमने थोड़ा सा, फाइन, राइट, एंड वी सेव, क्लियर सबको? नाउ वी कैन रन द मॉडल अगेन, सो वी रन द मॉडल अगेन द रेड एरो, राइट, और नीचे क्या लिख करके आ रहा है, आपको दिख रहा है, छोटा सा भी बड़ा सा दिखाएंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज देयर, नहीं। नाउ वी स्टिल हैव टू डिस्कस कि काई स्क्वायर हमको क्या प्रोवाइड करता है। दो कल के डिस्कशन या परसों के डिस्कशन के बाद, एंड ऑल द स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट नो, काई स्क्वायर किस लिए यूज किया जाता है, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन इज गुडनेस ऑफ फिट के लिए, राइट। सो आप यहां पे देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट, मिनिमम हैज बीन अचीव, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने थे, 21 थे, वी हैव डिटरमिन 21, आपको याद है कि नहीं याद है, 6 into 7/2, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पैरामीटर 12 तो आपने बताए थे, एक और था, दैट वाज अ कोवेरिएंट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड एट 13, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 21, ऑब्जर्वेशंस आर देयर, एंड कितने कंस्ट्रेंट लगाए गए, कितना एस्टिमेशन किया गया, 30, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रहा 8, सो दिस इज द काई स्क्वायर, इज ओके, क्लियर? सो ऑब्वियसली हम लोग इसको पूरा ही करेंगे, बस जस्ट हमारा इंटेंशन क्या था कि इससे थोड़ा सा आप लोग इस उससे फैमिलियराइज हो जाए कि हाउ द थिंग्स आर बीइंग हेल्ड, ठीक। सो दैट्स व्हाई सम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। वी ऑलवेज से, हम लोग के पास कोई क्वेश्चनर लेके आता तो वी ऑलवेज से कि नंबर ऑफ इंडिकेटर्स कितने होने चाहिए, सर आपको याद नहीं, हम
एजुकेशन का वो था, किसका था? एजुकेशन से कभी कोई आया था, उस पर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स किसी में एक थे तो दो थे। आपको मालूम है कि उसको हम चाह करके भी रन हम लोग नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू थिंक टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, क्वेश्चनर प्रिपरेशन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट यू विल बी यूजिंग शुड बी एटलीस्ट 3। ठीक, दीज आर द इश्यूज जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पार्सिमनी का भी इश्यू होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट इट विल बी गुड कि 3 तो होने ही चाहिए। तो अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। सो as demanded by certain people and demanded by number of participants, and I think so that first I should repeat the entire process for the time model, right? And after that I will be giving you a bit of the time so that you can practice the diagram, then we will be moving on. Okay, what is the importance of the diagram? Because the model, whatever the model that you run, is based only upon the path diagram that we will be constructing, right? So in case path diagram couldn't be constructed, so there is no point of running the MOS. Is that okay? So again, path diagram is the important thing. Fine, right? So I will be repeating all the steps so that you can practice, you can understand. And then I will be giving you around 10 to 15 minutes, right? So one thing, it will be better that don't do the things as I am instructing, right? आप थोड़ी देर बाद में कर लीजिएगा तो that would be better. Is that okay? Otherwise आपको क्या होता है कि you some points or some clicking may be left out, so that there will be problem. Is that okay? So obviously for the second diagram, after that we will be constructing the second diagram also. Then you can practice simultaneously. Okay, is that okay? So just have an eye on the things that I am doing. So first open the MOS. I am repeating the step. So this can be done through the analyze if that got embedded in your system. The other method is you can search for MOS, right? And select the MOS graphics. Is that okay? First step is clear? Okay, right? So we go to analyze, then we go to MOS. Okay. If you want to use this drawing board, that is a portrait, then that's also okay, because this is a relatively smaller diagram. But if you want a bigger drawing space, go to the view, right? We go to the view and we select interface properties, right? So we go to the view and then we select interface property. Here we have everything, page layout, format, colors, right? Whatever things you want is there. So in the page layout, you can select any page layout as per your convenience, as per your requirement. Suppose I am taking up the biggest space that is available, that is the landscape legal. Okay, so I have taken, this is landscape legal. Now this whiteboard becomes our drawing space. Fine, right? Now, what model we are attempting? Let me show you. Okay, so we want to draw this model. Okay,
So for the reference, you can have the photograph of this, right? Either this or this one that I have drawn, right? So here I am drawing this red ball. Okay, both are same. You can take this one or you can take that. Is that okay? Right? So we will be using this model, right? Means we will be replicating this model which is there on my PPT on the MOS graphic drive. Comfortable? Right. So as you see here, we have three constructs, right? And just for the convenience, हम लोगों ने जानबूझ के ऐसा लिया है, we have three indicators for each construct. Okay? Is that okay? So just remember this. Fine? Now, okay. So for that purpose, right, we will be selecting this button. Right? अब हम लोग फाइनल ही ड्रॉ करते हैं. This will be, we will be selecting this button. So through this button, we are simultaneously creating the latent construct as well as we are adding the indicators also. Is that okay? आप आगे भी बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं. Is that okay? Fine, right? So just have an eye on this. I will be selecting this, right? Now you have to decide the size or the shape of the construct as well as the indicators. जितना बड़ा construct होगा, indicators भी क्या होंगे, उतने ही बढ़ेंगे. So it depends upon the complexity of your model. अगर if you have a number of construct number of indicators, so you will be requiring relatively less. यहाँ पे ऐसा कोई issue नहीं है. So I have taken, suppose I have taken this size. Now it becomes fixed. And in the proportionate way, I will be creating the indicators also. Right? Since all the construct have three indicators, so we will be clicking our left button for 3 times. One addition, 2, अब left click करते रहिए, 3. Is that okay? Right? Next you have, fine. Next you have, is that okay? So now 3 constructs and each construct 3 indicators, and obviously the error terms also got created. Right? Don't bother about one क्यों लिखा, that I will be explaining after some time. Is that okay? Clear हो गया? Now you have to replicate that diagram. जैसा कि उस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर हम इनके बीच में if we draw covariances curve, so it might be possible that a covariance curve on this. So हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. The indicator may be shifted either to this side or to lower side. How this can be done? ये भी हमने आपको नहीं बताया. So for that purpose, यहाँ पे आपको दिख रहा है. What is this button? Rotate indicators of a latent phase. Okay. So we are just replicating the diagram जो वहां पे बना हुआ है. Exact replicate कर रहे हैं, though that is not required. So इसको हमने क्या कर दिया? Sorry. Right? I have selected this. This is the rotate indicator. Right? Click किया, ये rotate हो गया. Is that okay? Orthogonal या 90 degree rotation ही होगा. इसी तरह हमने इसको 2 बार क्लिक किया, ये नीचे हो गया. Is that okay? Right? अब now आपको लग रहा है कि इसको एरो करेंगे तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा, यहाँ पे स्पेस कम है. So you can move this entirely. इसको जरा ध्यान से देखिएगा. You can move this entirely. Pragya, I am telling you this, right? So if I use only bus, so only one thing would be shifted. But we want to shift not only this construct, but also all indicators, right?
So you will click on this bus as well as you should click on preserve symmetry, right? Means you should click on bus and simultaneously you should click on preserve symmetry. Now, as you see, both the buttons are highlighted. Is that okay? Clear hai? So now if you use this, तो ये पूरा move कर रहा है. Otherwise, अगर आप symmetry नहीं लेंगे, so only construct would be moved. ठीक, हम करके आपको दिखा देते हैं. हमने इसको नहीं लिया, हम ये move कराते हैं. I have taken only bus. देखिए कितनी चीज highlight हुई है. Only construct. आप देखेंगे खाली construct move कर रहा है. Move कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Okay. So it is always better to use in tandem this bus as well as this symmetry. ये हमने, sorry, I have selected this bus and this symmetricity, right? और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया. Is that okay? Right? Now we can either draw the covariances curve or we can name the indicators, right? किसी को भी हम लोग पहले कर सकते हैं. So before moving forward, let us check whether the data file is being connected or not, right? So we click on this, right? This is the, आपको फिर से दिखा दे रहे हैं. This is the select data file. Select data file, go to file name and select the appropriate file, that is the data type. Okay? And it is okay. यहाँ तक clear है? Right. So now we are naming them. You can directly double click and put the name PU. ये क्या हो गया? This is INT and this is PE. Is that okay? So we have named the three constructs. Now related to these indicators, we can use list variable in the list. ये button है. We can use list variable in the list. So it is there. For the data file, you should click this. This is the data file. Okay. Select data file. Is that okay? For changing direction, right? For changing direction, you can use, just a moment. For changing direction, you can use this. This is a rotate the indicators of the lettered variable. Okay. Some online participant has asked, so I was answering that. Right. Now here I am selecting the variables. The first variable is INT. Select this and drop to this box. Then select INT2, drop it here, right? Then select INT3, drop it here, right? The only care is it should made active. आपको दिख रहा color change means that cell become active. Okay. Then select PU1, drop it here. It doesn't matter कि किसी भी sequence में करें. PU3. Then we select PE1, then PE2, then PE3. So all measured variables are being connected from the model. Is that okay? Right? Now we have to draw covariances curve. There are two methods. You can use this double direction arrows. Otherwise, you can use plugins. एक मिनट आप लोग देखिएगा. If we use the plugin and directly click draw covariances, they are the covariances curve. So it will demand
कि किसके बीच में कोवेरियंस ड्रॉ करना, राइट। देखिए इन्होंने क्या लिखा, प्लीज एट लीस्ट टू एक्सोजेनस वेरिएबल बिफोर रनिंग, ठीक। सो व्हाई दिस एरर वाज, बिकॉज वी हैवंट सेलेक्टेड कि हमको ड्रॉ किसके बीच में करना है। सो फॉर दैट पर्पस गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स वन एट ए टाइम। अगर हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सबको ही ले लेगा, राइट। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वन एट ए टाइम। सो एज यू पुट दिस फिंगर, और यहां पे हमने करा इट इज बीइंग हाईलाइटेड, आप देखते जाएंगे सबके कलर्स चेंज हो गए, नाउ द कलर्स बिकम ब्लू। सो ब्लू मीन्स नाउ दे आर बीइंग मेड एक्टिव, फाइन, इज दैट ओके? Now go to plugins and draw covariances. So covariances curves are being drawn. ठीक है? So this is exactly the diagram जो आपको हमने दिखाया. Even if you want कि ये बहुत बाहर आ रहा है, इसको हमको अंदर करना है, तो देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ला करके इसको आप कर देंगे, ये क्या हो गया, शेप चेंज, फाइन, ओके, राइट। इफ यू डोंट रिक्वायर, दिस इज द चेंज शेप ऑप्शन, तो हमने चेंज कर लिया। अब आपको थोड़ा टचअप वगैरह करना है तो यहाँ पे ले जा करके टचअप कर दीजिए, दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए वो ले नहीं रहा। ओके, आप चाहें तो ये कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नॉर्मल रहने दीजिए। इज दैट ओके? राइट, अगेन जस्ट टू चेंज द शेप, एक बार फिर से देख लीजिए, दिस इज द चेंज शेप। इस फॉर्म में नहीं करना है तो आपने, यू हैव सिलेक्टेड वन, ये आपने इसको इस तरह से फिर नॉर्मल शेप में कर दिया, फाइन, इज दैट ओके? नाउ we have to name the error term. So go to plugins and select name unobserved variables. So all E1, E2, E3, E4 are being named. Is that okay? Fine. Now before doing anything, first save the file. So we have clicked this and let us put the name, इसको हम space दे देते हैं, where we want the saving. This is our folder and we have put the name TAM CFA. ओके, कुछ भी नाम दे दीजिए, सैम एमए लिख लीजिए, सैम सीएफए लिख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सो इट हैज बीन सेव, इज दैट ओके? इसके बाद आप जितने बार भी सेव करेंगे द थिंग्स वुड बी सेव्ड हियर ओनली, फाइन। तो आप चाहें तो तब तक इतना डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। आई हैव गिवन एम्पल टाइम, तो थोड़ा सा भी करेंगे तो हो जाए। कोई बात नहीं, उसको नहीं नहीं, तीनों इसलिए मूव कर रहे थे बिकॉज ऑल थ्री आर हाईलाइटेड। हाईलाइट खत्म, ऑल थ्री आर सिलेक्टेड, हमने डिसिलेक्ट कर लिया तो सिंगल आर्म हो गई। नहीं तो उसको डिसिलेक्ट कर दीजिए। ब्लू मीन्स दैट इज एन एक्टिव, ओके, इज दैट ओके? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया? राइट साइड, राइट। नाउ यू हैव टू डिफाइन कि आपको करना क्या है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर एनालिसिस प्रॉपर्टीज, राइट। सो दिस इज द बटन फॉर द एनालिसिस प्रॉपर्टी। अदरवाइज आप यहां से भी ले सकते, इन द एनालाइज कहीं पे होता है, ओके, वो बाद में ढूंढेंगे, राइट। दिस इज द एनालिसिस प्रॉपर्टी,
right? So click on the analysis property. So here, maximum likelihood is. Now in front of this, we have an option of estimate mean and intercept. Now it is not required at present. But if your data set has missing observations, then you should select estimate mean and intercept. ठीक है, तो अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. The method that we are using is maximum likelihood. Right? Now, we should go to output. Right? Means here we instruct how many outputs, means in our output, what should be there. So always there will be a minimization history. Select standardized estimate, select squared multiple correlation. Okay. And also select modification indices. We will be discussing the modification indices से हम क्या करेंगे. Though in this diagram, in this thing, nothing can be modified. Already बहुत छोटा है. But just to make you familiar, we will be selecting modification indices. Now there are other options also. We can test normality, we can test outliers, right? So at present, we are not selecting. We will be discussing it after a bit. Is that okay? Right? So whatever you select got added, right? You will click, you will cross this and then save. Final running se pehle, there must be one save. Is that okay? Right? Now, here we have calculate estimates. Right? Right? So we click calculate estimate. देखिए यहाँ पे ये आप चेक करते चलेंगे आपको क्या क्या दिख रहा है, उस पर थोड़ा देर में आता है. Minimization iterations, how many iterations has been used because we are using MLE. There are 12. Minimum was achieved. अगर ये लिख के नहीं आ रहा है, it means there is some issue in the running of the model. And there should be something written as chi-square. And this red button should be highlighted. It doesn't matter, maybe. कोई reason होगा या तो कुछ data उसमें होगा. If that is written, minimum has been achieved, then that's okay. And what is your chi-square value? That's okay. Is that okay? Right. So now what is the importance of this red button? अभी आप देख रहे हैं, here we have unstandardized estimate, we have standardized estimate. लेकिन आपको कोई value नहीं दिख रही है, isn't it? On the path diagram, there is no coefficient, there is no parametrics values, right? But if you click this red button, so these values got highlighted, right? Okay. If you click this red button, red is not there. तो नीचे क्या लिख करके आया यहाँ पे? एक मिनट ले आओ. सेव किया था सब? ये तो कनेक्ट हो गया, इसको सेव करो. इसका माउस यूज किया क्योंकि उससे तो हो नहीं पाता. सेव करो. नहीं इसको सेव करो. Three variables are unknown. कुछ वेरिएबल्स तुम्हारे कुछ तुमने डिफाइन नहीं करी. चलो एक बार इसको फिर से कर लेंगे. ठीक है, ये आप रिपीट करते चलो फिर से देखा. ओके, राइट. So if you
put this red button on, so this got highlighted. अगर आप फिर से इस black button को करेंगे, so these values got hidden, right? Now these are the values. आप देख रहे हैं, these are the unstandardized estimate. Means अब जैसे यहाँ पे 1.48 value is there. If you put the standardized, this value becomes 0.57. दोनों में difference क्या है? Because this is a covariance curve. So unstandardized means this is the covariance between PU and INT, right? But if you select the standardized value, so this is the correlation between PU and INT. Is that okay? दोनों में difference समझ में आया? Unstandardized means covariance, standardized means correlation, and it is for the two directional errors, right? So as you see here, the correlation coefficient between PU and PE is 0.40. Unstandardized means covariance, right? And standardized means we have divided by the standard deviation. हमने आपको बताया था ना कि correlation can be taken as the standardized value of covariance. Is that okay? Fine. In the same way, जैसे आप इसको देख रहे हैं, so now let us discuss these values from PE2, PE1, PE2 and PE3. What are these values? एक तो 1 होगी, 1 को इग्नोर कर दीजिए. One value is 0.94, other value is 1.02. So this is the unstandardized path coefficient or unstandardized regression coefficient. आपको B and beta का difference मालूम है कि नहीं है? B is unstandardized and beta is standardized. अगर आप इसको standardize कर देंगे तो that becomes for beta. Is that okay? यहां तक clear है? Now, even if अगर आपको ये confusing लग रहा है, there is no point of discussing this diagram. Everything that is there on this diagram will be there in the output also, right? So हम लोग इसको अपने रिसर्च पेपर में लगा सकते हैं, बट वी नॉर्मली डोंट डिस्कस. ठीक, हम लोग डिस्कस करते भी चलेंगे. वी शुड लुक फॉर व्यू टेक्स्ट. व्यू टेक्स्ट मीन्स आउटपुट इज देयर. ओके, राइट? व्यू टेक्स्ट मीन्स आउटपुट इज देयर. So if you click view text, right, MOS output is there. The first thing, चलिए हम आपको शुरू से बताते चले. देखिए, what is the name of your model? What is the name of your file? tam.cfa, और ये तो उसकी आउटपुट फाइल है .amw. एनालिसिस समरी, ये सिर्फ आपको बताएगा कि आपने इसको कब रन किया था. नोट फॉर द ग्रुप, इसको आप याद रखिएगा. वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. दिस मॉडल इज रिकर्सिव. व्हाट डू वी मीन बाय रिकर्सिव? जब हम लोग अभी नोट्स पढ़ेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट डू वी मीन बाय रिकर्सिव मॉडल. इज दैट ओके? राइट. वेरिएबल समरी आर, इट इज द एवरीथिंग इज देयर. जो भी मॉडल आपने यूज किया, व्हाट आर द एंडोजेनस वेरिएबल, व्हाट आर द एक्सोजेनस वेरिएबल्स, एवरीथिंग इज देयर. ओके, number of variables in your model, observed variable, unobserved variables, and so on. These are the parameters. Now, the first important thing is you should look for nodes of the model. In the nodes of the model, here you can check whether the proper minimum has been achieved or not. Number of distinct sample moments are 45. Why 45? How many variables are there? कितने थे? 9 थे. तो 9 into 10 divided by 2, तो कितने टर्म्स बनेंगे? कितने वेरिएंस को वेरिएंस के टर्म्स बनेंगे? दैट बी 45, राइट? तो इन 45 में 9 विल बी द वेरिएंस टर्म्स एंड 36 वुड बी द कोवेरिएंस टर्म दैट आर एक्सक्लूसिव, नॉट द रिपीट टर्म. ओके, सो देयर विल बी यूनिक 45 टर्म्स. 9 विल बी द वेरिएंस टर्म. आपको मालूम है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे बनेगी? 9 by 9 की बनेगी, right? So there will be 9 variance term and 36 would be the covariance term. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं या लोअर ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल को ही कंसीडर करें, राइट?
What is the chi-square value? ये हम लोग डिस्कस करेंगे. Chi-square value is 42.64. Degrees of freedom would be 24. Why degrees of freedom would be 24? Number of districts parameter to be estimated is 21. ये आप से चेक भी कर सकते हैं. तो 45 minus 21 would be 24. And what is the p value? 0.01. Is that okay? Fine. Okay. Now, after that, we will be discussing two very important things. एक तो है एस्टिमेट और दूसरा क्या है? मॉडल फिट. एस्टिमेट मींस ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, अबाउट देम वी हैव टू डिस्कस. बट बिफोर डिस्कसिंग एस्टिमेट वी शुड डिस्कस द मॉडल फिट. अगर हमारा मॉडल इज ए गुड फिट, देन ओनली वी शुड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट्स. इज दैट ओके? राइट. सो दिस इज द मॉडल फिट. आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं. वी विल बी डिस्कसिंग इट. इज दैट ओके? समझाएंगे अभी. Right? So this is a model fit. Means here we are evaluating whether our model is a good fit or not. Fine? Okay. So now, let us discuss the concept first. Then I will be coming back to this. Okay, so up to this point, the concepts are clear. Our model is over-identified, so that's why we have obtained the minimum. किस-किस का नहीं हो पाया था? एक तो प्रियंका का. नहीं, आप लोगों ने रन किया था. What was the error? तो आप लोगों ने या तो कुछ गलत वेरिएबल्स ले लिए. नहीं, आप उसको पूरा करके, राइट, एंड मेक थोड़ा सा उसको बड़ा बनाइएगा डायग्राम. ओके, मतलब जो सर्किल बनाइएगा दैट शुड बी अ बिट लार्जर. ओके, इधर व्हाट इज द एरर हियर? ओके, ओके, just the repetition. Okay, the first thing is I am repeating everything. Kindly check. First, open this drawing space. Right? आपका पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट रहने दीजिए. Right? So first select this. Okay, and take a proper sheet जिसमें सब चीजें आ जाए, मतलब बाहर ना रहे. Right? Then click number of times as per the indicator. So we are clicking 3 times. ये हो गया. Right? After that, select these 3 constructs using this arrow. This select object one at a time. You select all these 3. So that will be blue highlighted. Then after that, go to plugins and draw covariances curve. So covariances curve will be drawn. Fine. See? After that, you should click name unobserved variables. Right? So there should be 9 error terms. They are being named. Done? Okay. Right? After that, obviously you have selected the data file. Right? So through the data file, whatever the data file, this is the data file, you should define this list variable. कैसे करेंगे? इनको select करते रहिए and dropping it inside the box. बाहर नहीं drop करेंगे, right? Dropping it inside the box. So we have the connection for all the indicators on this diagram. It is done, right? Then click on this. This is the list variable in the data set, right? And through this, select this and drop it inside this box. Okay,
It is done, right? Then either save here or you should go to analysis property, right? In the analysis property, मिनिमम चीजें अभी हम आपको टिक करा रहे हैं. दिस इज मिनिमाइजेशन हिस्ट्री, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट, स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन एंड द मॉडिफिकेशन. Okay, then cross this and then save your model. Done. Save हो गया. Okay. After that, use calculate estimate. और हर अगर again the error is there, so so delete that drawing MOS graphic base, select a new base and then run it. Okay, it is done. Fine, right? So now if everything is being appropriate, so you will be getting minimization. It is being written here and there should be some chi-square value. Fine. Now we will be discussing the output. It doesn't matter whether one is written horizontally or vertically. And the sequencing of error terms is not the rule. It is वो randomly लिखता है. It doesn't matter कि E1 किसको लिखा, E2 किसको लिखा and E3 किसको लिखा. Okay, Pragya? Pardon? One अभी हम discuss कर रहे हैं. Right? For the time being, ignore one is written there. We will be discussing one. Okay? Which revision? Okay. This is the analysis property. Through this analysis property, we give whatever things we require in the output. Okay. Is that okay? Right. Now, before moving forward, we will be discussing this. So let us discuss the first point जो लोगों को major problem लग रही है. Again, some disclaimer. Sequencing of E1, E2, E3 all are random. So it doesn't matter कि उसने कैसे लिखा है. One can be horizontal, one can be vertical. It doesn't matter कैसे आपने उसको space किया. Now we will be discussing this one actually, right? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि one कहाँ कहाँ पर है. Any observation you have, कहाँ कहाँ आपको one दिखाई दे रहा है. नहीं, actually we have two type of variables. One which are there in the data set, they are the measured variables, so they can be termed as the observed variable. और दूसरे क्या है? Unobserved. So I am repeating my question. One आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? Observed में दिखाई दे रहा है कि unobserved? Actually unobserved में, right? देखिए E1, E2, E3, E4, E6, E9 are all are unobserved. हर unobserved में one दिख रहा है. Now let us discuss the construct PU. PU observed है या unobserved? Unobserved है. PU1, PU2, PU3 are the observed. So this unobserved thing cannot be measured, isn't it? Unobserved thing cannot be put on the metric scale. So we have to set the scale. देखिए word क्या use किया जाता है? The setting the scale. अभी हम आपको notes में दिखा देंगे. Don't worry. We have to set the scale. Why setting of scale is required? Because unobserved thing cannot be measured. They cannot be put on. They cannot be put on metric scale. So for that purpose, there are certain methods. MOS, what MOS uses,
वो जो 3 इंडिकेटर्स है उसमें एक की वैल्यू 1 कर देता है, राइट? सिंस इट डिफाइन द वैल्यू 1, so all the other unobserved things will be measured. Is that okay? So उसमें 3 में it has 3 या 4, how many indicators are there? That will be putting 1 to 1 indicator just for setting the scale. Is that okay? Right? It means if we cross this line तो हमारा 1 हट जाएगा. So for that purpose we have to put 1 somewhere else. हम अब आपको कभी दिखा दें. Is that okay? Since here only one relationship is there and 1 is required in order to measure E1, E2, E3. So that's why 1 are there. Right? हम आपको नोट्स में भी एक बार दिखा देते हैं. Yes. This is the point. Specifying the model. What specification means? Specify free and fixed indicators associated with each construct with no cross loading. वो भी हम लोग सब डिस्कस करेंगे, राइट? सिंस आप लोगों ने कई लोगों ने 1-1 पूछ लिया तो आई एम डिस्कसिंग आउट ऑफ टाइम. Setting the scale is latent construct, means the construct they are not observable, they have no metric scale. So for all construct there are two methods: fix one factor loading as 1 or fixed value of the construct variance is 1, right? Amos uses this. Okay, is that okay? Right, now you have the answer कि why 1 is there, and that is an unobserved thing. इसीलिए जब हम लोग अनस्टैंडर्डाइज थिंग वन वी पुट एज द स्टैंडर्डाइज तो वो चीज उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? सो कॉन्सेप्ट ऑफ 1 इज देयर. आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इट विल पुट. बट समहाउ if we have to drop that relationship, suppose the dropped relationship involves 1, so for running the model again you have to put something else as 1. ठीक, हम लोग करके दिखा देंगे. Is that okay? Right. So these are the various issues जो हम लोग we will be discussing later on. Right. So sequentially we have discussed the things up to identification. यहाँ तक सबको clear है? Right. Now देखिए एक बार हम लोग स्लाइड से जा रहे हैं and we will be discussing everything again. So don't bother. हम क्योंकि बहुत सारे चीजों को एक साथ ले इसलिए रहेंगे that you should be on board with respect to a number of things. Okay, so definitely the problem would be repeated. अभी हम लोग को theoretical model भी करना है, but just try to have a basic idea of everything. Definitely we will be discussing everything again. हम लोग मॉडल भी फिर से बनाएंगे, right? So the first thing is, for any model what is required, we check whether the model is valid or not. Okay, even in analytics also, जो लोग भी analytics से हैं, we develop our model from the training set. और उसको validate किसके थ्रू कराते हैं? टेस्ट सेट के थ्रू. टेस्ट हम करते हैं कि it is there or not. So here the model is being proposed by the theory. TAM theory से आया है. In order to validate, we have to examine whether the data or the sample that we have selected वो उससे synchronize हो रहा है या नहीं हो रहा है, right? फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जो नॉर्मली हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए फिटिंग में यूज करते हैं, राइट? सो वैलिडिटी मींस वी आर एग्जामिनिंग गुडनेस ऑफ फिट, वेदर आवर मॉडल इज ए गुड फिट. ओके, राइट, टू द डेटा और नॉट. हम लोग अपना एग्जाम्पल ले, सपोज हम 40 नंबर की शर्ट पहने. इज दैट ओके? सो 40 नंबर की एक डिफाइंड शर्ट बनी है. So for a good fitting वो हमारे बॉडी शेप पे क्या आना चाहिए?
बॉडी स्ट्रक्चर पे प्रॉपर आनी चाहिए, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि दिस शर्ट, या जो भी आप कंपनी का नाम ले रहे हैं, कि मान लीजिए वैन ह्यूजन की शर्ट्स आर गुड फिट. इज दैट ओके? तो देर आर टू थिंग्स. वन इज द शर्ट नंबर. शर्ट नंबर इज द मॉडल, राइट. उन्होंने एक पर्टिकुलर डायमेंशन सोच करके 40, 38, 42, 39, 44 नंबर की शर्ट्स बना ली. रियलिटी कहां पे आ रही है? ऑन द डिफरेंट बॉडी साइज. So that body size is the same, right? So when we say that this is a good fit, जब दोनों में कोई basic difference नहीं होता है, right? This is a real life. The same real life is there here also. But now वहां तो हम लोग observation से काम चलाते हैं. Here we require some defined measure. So we will be discussing goodness of fit measure. Objective clear हो गया? Means we are trying to know whether the model that we have proposed is there, is validated through the data set or not. So that is known as model validation. Is that clear? So first we are examining goodness of fit. So यही हमने आपको बताया, we compare theory, right? Theory कहाँ से होती है? We have estimated covariance matrix. Conventionally it is being denoted by sigma k. आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यूज किया है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द एस्टिमेटेड कोवेरियंस मैट्रिक्स. ठीक. हम बाद में जब थर्ड डे आपको एक बार एक्सेल दिखा देंगे तो यू विल बी इफ यू वांट यू कैन नो कि इसको हमने कैसे निकाला था. हियर एवरीथिंग इज बीन डन बाय द सॉफ्टवेयर, तो आपको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं. एंड द अदर थिंग इज द रियलिटी. रियलिटी कहां से आई है? फ्रॉम सैंपल. इसको हम डिनोट करते हैं एस, राइट. स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए क्वेश्चन, ये बेस अच्छा तो लिख ही दिया हमने, सॉरी. कोवेरियंस मैट्रिक्स, राइट. सो व्हाई दिस इज अ कोवेरियंस मैट्रिक्स? बिकॉज दिस इज अ कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल. सो ये कॉन्सेप्ट से कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाई गई है. ये कहां से बनाई गई है? सैंपल से बनाई गई है, राइट. इज दैट ओके? एक्सेल से भी कोवेरियंस मैट्रिक्स बन जाती है, एसक्यूएल से भी कोवेरियंस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देता है. सो वी कंपेयर दीज टू. So for a good fitting, these two values should be क्या होनी चाहिए? Right? Absolute fit के लिए these two values should be exactly similar. Right? Otherwise इनके बीच का जो difference होना चाहिए, difference क्या होना चाहिए? This difference should be negligible. Is that okay? So we हम जो सबसे एलिमेंट्री टेस्ट काई स्क्वायर का यूज करते हैं उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं. वी विल बी यूजिंग काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. रिमेंबर दिस इज द ओनली स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल. बाकी चीजें बाद में बताएंगे बाकी टेस्ट कौन से हैं. सो हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग द कॉन्सेप्ट. सो यू कैन अप्रिशिएट कि इसमें होने वाला क्या है. सो दिस काई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ एस माइनस सिग्मा के. Is that okay? So this is the real valued thing and it represents the real value. But simultaneously with this, it is also a function of, ये किसका function है? Sample size का है, right? So it is a function of sample size as well as the difference between S and sigma, right? So obviously sigma k depends upon number of fixed parameters and number of indicators. ये तो अभी हम लोग आगे discuss करेंगे. Is that okay? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर नंबर ऑफ यूनिक वेरिएंस कोवेरिएंस सिस्टम. दे आर p into p plus 1 by 2 minus number of estimated parameters. This we have discussed. Is that okay? Right. So जिन्होंने भी chi square पढ़ा उनको मालूम है कि हम लोग chi square में null hypothesis क्या propose करते हैं कि that there is insignificant difference between the observed thing and the estimated thing. So in a better language means our model fits the data set. Is that okay? Means this there should be negligible difference between these two. Model fits appropriately. Is that okay? Fine. अब now we have to test. इसको हम chi square के थ्रू टेस्ट करते हैं. ठीक.
जैसा आपको मालूम है, there should be some value of chi-square, right? And from here we calculate the p-value, right? And if p-value is less than 0.05, then we reject H0. If p-value is greater than 0.05, then we retain or don't reject H0, right? So if p-value is greater than 0.05, so हम क्या कहेंगे? We retain H0, means model is a good fit. Is that okay? Is that okay? Right? Now, अगर आपने कभी chi square का शेप देखा हो, so this is, we are drawing, just to explain the things, we are drawing the probability distribution of chi square, right? It cannot be negative. आपको मालूम ही है कि this is a square, right? So this तरह का कुछ shape आता है, right? And the area under this curve is the probability, right? Now, if chi square value is low, right? If chi square is low, जैसे ये 0 है, ये infinity पे गया, suppose chi square is this, right? So the p value would be, we consider the right tail probability. So this is the p value, right? It means lower the chi square value, higher is the p value, means that value would be greater than 0.05. So we retain. So we say that our model is a good fit, right? Suppose value of chi square is large, right? Suppose value of chi square is large. So obviously chi square value is large. So chi square will lie on the extreme side. And the corresponding right tail probability would be low, right? And it might be possible that it will be lower than 0.05 or whatever the level of significance that we are examining. हम लोग default में लेकर के चल रहे हैं 0.05, right? And what actually we require a low value of chi square. What we require a low value of, right? Then only we can say that our model is a good fit, right? अब आप ये बताइए, normally just by the observation, chi square की वैल्यू लो मिलेगी या हाई मिलेगी? आप फंक्शन को देखिए और बताइए, just by the observation anyone can tell. फंक्शन का मतलब है कि the value of chi square depends upon two things. Number one, size of the sample. Number two, the difference between S and sigma k. The difference between observed variance covariance matrix and the estimated variance. Just by the observation, chi square value आपने देख रखी है, वैल्यू उसको भूल जाइए. chi square value लो होगी हाई? बोलो क्यों हाई हो? Because it depends upon size of the sample. और हम शुरू से कहते हुए चल रहे थे कि chi square is a large sample technique. देखिए, we made an effort to have a big sample size. हम लोगों ने शुरू में लिया था कि नहीं लिया था? There should be 20 observations for each. So invariably our sample size would be large, right? So even if there is a very good fitting means there is minimum difference between S and sigma k, even then value of chi square would be high, right? So because it is a function of n also, that is the large sample size. So this is a tyranny. This is the only test available, और invariably इस test से हमको जो value मिल रही है, it will be giving a high chi square value. So automatically the H0 would be rejected. If we go by the chi square value, आप फौरन क्या कह देंगे? कि our model is not a good fit. ठीक? आपको याद है chi square की वैल्यू कितनी मिली थी आपको? Just to show you again, chi square की वैल्यू हमको कितनी मिली थी? 42.564. 42.564 is a big value for degrees of freedom 24. And what is the p value? P value देखिए, 0.011. 0.011 is less than 0.05. It means we reject H0. We reject H0 means our model is not a good fit. It is there, यहाँ पर भी दे रखा गया है. It is there in the model fit. Model fit आपको दिख रहा है?
तो दिस C mean is C is the chi, CHI, right? M is mean. So this is the chi square minimum value. ये वैल्यू कितनी है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपने निकाली थी 21, सॉरी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 24 एंड व्हाट इज द पी वैल्यू 0.011। तो चाहे आप वहां से देखें चाहे आप उसमें देखें, मॉडल फिट का स्क्वायर वैल्यू इज हाई, हमेशा ही हाई होगी, सो पी वैल्यू वुड बी लो एंड वी विल बी रिजेक्टिंग इट। इज दैट ओके? फाइन, राइट, क्लियर है? आपको ये बताना क्यों जरूरी था? बिकॉज काई स्क्वायर इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे तो आप तो लिख देंगे कि हमारा मॉडल इज नॉट ए गुड फिट, हमेशा ऐसा ही हो। इट वुड बी रेयर कि आपको काई स्क्वायर की वैल्यू लो मिले एंड मॉडल अपीयर्स टू बी अ गुड फिट, हमेशा ही ऐसा हो, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू द नोट्स, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम। Now we are discussing we are discussing the absolute model fit. अभी तक हम लोग ब्रॉडली चीजें डिस्कस कर रहे थे। किसी भी गुडनेस ऑफ फिट मॉडल में हमको जरूरत किन किन चीजों की पड़ेगी, बताइए? नंबर 1, आवर मॉडल शुड बी अ गुड फिट। ठीक। नंबर 2 क्या होता है, जैसा आप लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने करा था कि नहीं? आपको आउटपुट याद है? सबसे पहले आपने नल मॉडल से स्टार्ट किया था। नल मॉडल का मतलब क्या होता है? एनीवन? where we don't consider any relationship. So here also we are attempting maximum likelihood. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी कौन सी टेक्निक यूज की? एमएलई ही तो यूज किया गया था कि नहीं? तो उसमें भी वी स्टार्ट विद नल मॉडल। नल मॉडल का मतलब है देयर इज नो रिलेशनशिप एंड दिस इज द प्रपोज मॉडल जो हमने बनाया है। सो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नल मॉडल। इज दैट ओके? So that is known as incremental fit indices. Incremental fit indices means हमने नल मॉडल से कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर। इज दैट ओके? एब्सोल्यूट फिट जो आपको दिखाई दे रहा है, एब्सोल्यूट फिट का मतलब क्या हुआ? वी आर लुकिंग फॉर दिस मॉडल ओनली, हम कुछ और नहीं देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? इंक्रीमेंटल फिट इंडिसेस। इंक्रीमेंटल फिट इंडिसेस मीन देयर इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द नल मॉडल। ओके, अभी हम सब इसको डिस्कस करेंगे, राइट? और भी कुछ कंपैरिजन करना चाहिए इस तरह के। वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ मॉडल्स, राइट? सो हमारा मॉडल बाकी के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? इट शुड बी बेटर होना चाहिए कि नहीं? दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, इसमें नहीं पॉसिबल है, बट इन ए नंबर ऑफ सिचुएशन वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मॉडल्स। तो जो भी मॉडल हम प्रपोज कर रहे हैं दैट शुड बी बेटर एज कंपेयर टू ऑल द कॉम्पिटिटिव मॉडल। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर? नाउ इसमें कुछ लोग मशीन लर्निंग या डेटा साइंस वगैरह का कोई कोर्स वोर्स कर रहे हैं? एनालिटिक्स? ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज ऑकम रेशो। ठीक, गूगल करिए। स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑकम रेजर, RSZOR। ओके, सपोज आई आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट? सपोज बाहर बारिश हो, हम आपसे पूछे कि बारिश क्यों हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? कि डार्क क्लाउड्स थे, या आज बारिश क्यों नहीं हो रही? आप कहेंगे क्लाउड्स ही नहीं थे, या व्हाइट क्लाउड्स इसलिए बारिश नहीं हो रही। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि अर्थ का मूवमेंट हुआ, अब अर्थ के मूवमेंट के बाद कुछ और दूसरा प्लेनेट अर्थ के पास आ गया, देयर आर सम celestial movement also. Because of this celestial movement there is an impact upon the geospatial activities. So उससे ओशन में क्या हुआ? there is a change in the ocean current, and because of the change in the ocean current lots of clouds are created, and these clouds are being shifted to the northern region because of the different साइक्लोनिक कंडीशन। इस टाइप से पूरी कहानी बताएं और एंड में आप कह देंगे so these are the dark clouds because of which there is a rain।
So for everything there are two explanations. One is simple, other is too much complex. किस explanation को use करना चाहिए? Simple को करना चाहिए, right? So this is a philosophical concept, and this philosophical concept we have adopted in machine learning also, right? क्योंकि उसमें number of models होते हैं. So in the machine learning we always say if there are two parallel models, one is simple, other is complex. So always go with the simple model. Is that okay? Concept समझे? Right? So whenever there is some more, अब इसको generalize कर रहे हैं here. Whenever there are a number of models are possible, always go for that model that is simple, means that is less complex. Is that okay? Same thing happens here also. That if number of models are there, तो आप उसी models को prefer करेंगे that is simple with respect to the other one. This concept is also known as parsimony, right? Is also known as parsimony. So this is the concept that we cover Occam. Is that okay? अभी हम लोग इससे वापस आ रहे हैं. So whenever we examine goodness of fit, we want to discuss these three concepts, right? Now we will be discussing absolute fit index. अब हम इसको पूरा discuss करते हैं. So absolute fit means we are concerned with this model only, how well our model reproduce the observed data. Means simply we should compare sigma k, that is the estimated thing, and S, that is the observed. As I have told you, there is only one statistical measure, that is chi-square. The fundamental and only statistical measure that is available. But what is the problem? It depends upon size of sample as well as model complexity. And we normally go for large samples, right? So invariably chi-square statistic is high and it will be rejecting our H naught. So it will be providing that our model is not good. Is that okay? So this statistical model or statistical measure is always a problem. So we go for some heuristic measures. Heuristic measures means there is no testing is involved. So that's why a number of options are there. So first one is the goodness of fit. इसमें आप देख रहे हैं इसमें कंपेयर किसको किया गया है? फिट को किया गया with respect to null. ठीक? GFI, so it should be a high value greater than 0.9. So this is a goodness of fit model. इसके बाद ये जो तीन है, they are actually the badness of fit model because they consider the error. Error क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. Goodness of fit ज्यादा होनी चाहिए. Error क्या होनी चाहिए? So the different measures are, first one is RMSEA, which is the full form of root mean square error of approximation. You can ignore the formula, right? So this is the most widely used. इससे भी काम चल जाएगा, बाकी को ignore कर सकते हैं. And the value should be okay. Standard क्या है? It should be less than 0.05. Fine. And this P close should be greater than 0.05. मतलब accept होना चाहिए, reject नहीं होना चाहिए. Okay. So this is related to RMSEA. There are other. This one is root mean square error और इसको standardize कर दे रहे हैं, तो that is known as standardized root mean square error. Obviously, all are badness of fit, so all these values should be low, right? Means in the absolute sense we want these values should be less than 0.05 और अगर हम बहुत compromise करें, so it should be less than 0.1. Is that okay? ठीक. आपको लग रहा है there are too many measures, so normally what we report, we always report chi-square statistics along with its degrees of freedom, along with its p-value. We always report. Is that okay? Then we can report
only this. This is goodness of fit. Is that okay? And related to badness of fit, we can report only RMSEA. Rest आप ignore कर सकते, right? And there is one more term जो भी आपको भी output में दिख रहा है, that is known as normed chi-square. Okay? Normed chi-square is chi-square divided by degrees of freedom. What was the value of our chi-square? And how many degrees of freedom are there? So if you solve, you will be getting 1.77. ये आपका आउटपुट में भी होगा. Is that okay? So this is the normed chi-square. This value should be less than 3 or at most should be less than 5. So on a strict sense, it should be less than 3. Otherwise, अगर थोड़ा हम लोग lenient है, it should be less than 5. Is that okay? But important thing, it is not a substitute for reporting the actual chi-square and degrees of freedom separately. So आप क्या क्या report करेंगे? You will report chi-square. You will report degrees of freedom. You will report the p-value for chi-square, right? Then you can report normed chi-square. Then you can report goodness of fit, GFI, and then we will be reporting RMS. Is that okay? इसको आप फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए. वी आर मूविंग टू द आउटपुट, क्योंकि हमारे पास तो दो स्क्रीन है, हमको दोनों आउटपुट दिख रहे हैं, दोनों चीजें दिख रही हैं. अदरवाइज आपको कनेक्ट करना है जो आपको फॉर्मूले में दिखेगा. इज दैट ओके? फाइन. So now I am changing my screen, right? This is the first, that is the C minimum. Okay. Chi-square value is known, 42.564. Degrees of freedom are 21. What is the p-value? We have already discussed. And what is the normed chi-square? 1.773. यहीं से देख के हमने लिखा था. Is that okay? So this is well below 3. Is that okay? Again, this is not a test. All these are the heuristic measures. So आप कभी ये word नहीं use करेंगे. The model has been tested to be valid. Right? तो हमेशा एक soft word use करेंगे. The model can be taken as following absolute fitness, or it is a relatively a valid model. Is that okay? क्योंकि हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे, we are using heuristic model. So one thing is this, ये आपने रिपोर्ट कर लिया. This is this. Is that okay? इसके बाद आपको किसको रिपोर्ट करना है? नहीं, पहले तो पॉजिटिव पे रहिए. नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे? GFI. What is the GFI? 0.963. This value is obviously higher than 0.95 or even 0.90. Is that okay? So ये वैल्यू आप रिपोर्ट करेंगे और आप कह देंगे this is greater than the thumb value, right? That is the thumb value. कोई statistical justification नहीं. Is that okay? Right? After that, just a moment. अब हम लोग किस पे आए? RMSE पे आए. आपको दिख रहा है? What is the RMSE value? 0.055. It is slightly above 0.05, but it can be acceptable. और आप P close देख रहे हैं, P close is greater than 0.05, right? तो उसका रिजेक्ट करने का कोई सेंस नहीं. We can say that this value is relatively low. Is that okay? Right? So other values are also there. जैसे ये this is root mean square, this is 0.05 and so on. Right? इस टाइप के आपको values मिल जाएंगे. There are other values also जो हम आपको नहीं पढ़ा रहे, statistics वालों को मालूम होगा, जैसे AIC, BIC, right? ये भी क्या होते हैं? They are also they are the measures to examine the appropriateness of the model. So AIC, BIC ये errors को represent करते हैं.
since there is no limit कि किसके बीच में देखना, that's why we are not discussing Ekake information criteria and the Bayesian information criteria, right? Okay, so आपको बहुत सारे मेजर्स मिल जाएंगे, you can interpret a number of one. Fine. So from these three हमने क्या identify किया, that our model is having good absolute fit index. Is that okay? Don't worry, we will be repeating these steps a number of times. हर मॉडल के साथ हम रिपीट करेंगे. This output will be there always. चाहे हमारा कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल मॉडल हो, वैल्यूज में भी चेंज, हेडिंग्स वुड ऑलवेज बी द सेम. और आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सम वैल्यूज माइट बी, सम मेजर्स माइट बी डिफरेंट. इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन? Any question? Online participant, any question? Yes. Okay. Concept की table खाली. Okay. What is root mean square error of approximation? Obviously, this is an error. So for that purpose, we are considering chi-square and we are norm, making it norm. Norm का मतलब क्या है? एक particular value के बाहर ना जाए, right? So this is error. So it should have a low value, as well as the p close. P means the p value of the close should be greater than 0.05. It should be acceptable, right? So if we go for the table, what is the value? RMSE value 0.055, which is slightly above 0.05, but it can be accepted because the P close is 0.343, that is greater than 0.05. Is that okay? आपको दिखा P close सामने भी है. Okay. एक चीज और याद रखिएगा, when we review the paper, it is very important. आपको सब वैल्यूज तो मालूम ही होती हैं, और थोड़ी सी मेहनत करें इसको वर्ड में, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके यू कैन चेंज द वैल्यू. ओके, राइट. दो दे कैन बी रिकन्फर्म, क्योंकि सबके फॉर्मूले होते हैं. पहला जो रिव्यूअर है, जैसे हम लोग जो पहली प्रॉब्लम पकड़ते हैं, अगर कोई मॉडल हर चीज पे बेस्ट दिख रहा है, जबकि दिस इज ए वेरी सिंपल मॉडल, सो इट इज नेवर पॉसिबल. देखिए, ह्यूरिस्टिक देने का मतलब ये है कि देयर आर ए नंबर ऑफ मेजर्स and it is highly unlikely that all measures should be satisfied, right? So it is highly possible कुछ satisfy होंगे, कुछ satisfy नहीं होंगे. जैसे आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा? RMSE is slightly above, but P close is okay, GFI is okay, right? Root mean square error is also okay, 0.05 है खाली, 0.05 is the limit. So it might be possible. In the real data, you have to justify कि अगर कुछ वैल्यूज ज्यादा आ रही, कुछ वैल्यूज कम आ रही, तो ये बॉदर ना करिएगा कि ऑल द वैल्यू शुड बी एज पर द डिजायरेबिलिटी. आप लिखिएगा उसको, स्ट्रांगली जस्टिफाई करिएगा, बिकॉज these values are important, that's okay, but more important thing is the theory. तो अगर theory justify हो रही है, then your interpretation is always considered to be good. Is that okay? तो ये बिल्कुल नहीं बॉदर करिएगा कि everything should be satisfied everywhere. Okay? Reasonably satisfy होना चाहिए. This we do in the normality also. अगर आपने कभी ट्राई किया हो, there are 5 or 6 measures, 6 methods to examine the normality, right? Kolmogorov-Smirnov test, number of tests are there, Shapiroff-Wilks test is there, right? The bell curve shape is there, okay? Box plot is there. We have stem and leaf also there. We have normal PP, normal QQ. There are n number of tools are there. अगर आप EDA में पढ़ेंगे, and it is highly unlikely कि हर चीज पे डेटा क्या है, नॉर्मल है, unless that data has been created by some person who is knowing statistics, right? वो उस तरह से डेटा को बनाएगा, but real data में it is not possible. Is that okay? Okay. So now I am coming back to the second concept. आज आप लोग जा करके मॉडल जरूर बनाइए. ओके, दो मॉडल बनाइएगा, आपके पास दोनों के डायग्राम है. वन इज फॉर CFA एंड वन फॉर
द स्ट्रक्चर मॉडल वेयर यू हैव टू एरो, राइट। तो कम से कम आपको एरर मालूम चल जाएगी, तो कल हम यहाँ पे पहले से रहते, यू कैन डिस्कस बिफोर द क्लास अगर आपके मॉडल में देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक हम पूरा मॉडल नहीं रन करेंगे आई कांट टेल कि एरर कहाँ पे हुई है। कुछ भी एरर हो सकती, कोई भी चीज एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गई, कोई भी चीज, राइट। और अगर मॉडल गलत बनेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इज दैट ओके? तो इसको आप कर लीजिएगा, बिकॉज टुमारो हम लोग जो मॉडल लेंगे दैट विल बी मच कॉम्प्लिकेटेड। आपने एच बैट केस देखा, बड़ा सा केस है कि नहीं है, राइट। सो at least you should be comfortable on this point, right? And that HBAT case would be used for mediation also, that would be used for moderation also. So that will be our ultimate case. Fine. इसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे कुछ और, ये सिर्फ आपको एट ईज करने के लिए दिया गया, राइट। नाउ वी कम टू द इंक्रीमेंटल फिट इंडेक्स। ओके, as we have discussed, incremental fit index means our model has done something as compared to the baseline model, right? So इंक्रीमेंट इसी को तो कहेंगे कि बेस से हमने क्या करा है। अब जैसे हम लोग ये कहें कि आपके लिए ये वर्कशॉप, देखिए आपको हो सकता है पहले से कुछ नॉलेज हो, आपके लिए ये वर्कशॉप कब यूजफुल मानी जाएगी कि वॉट एवर योर नॉलेज इज, ये नॉलेज में थोड़ा सा क्या हुआ है, incremental change हुआ, whatever your level of knowledge is, then we say that our workshop is a good। या हम आपको कुछ चीज, टीचर का काम क्या होता है कि आपका जो भी लेवल है उस लेवल को इंक्रीज कराना, राइट। सो हाउ वेल एस्टिमेटेड मॉडल फिट रिलेटिव टू द बेसलाइन। नल मॉडल मींस नो रिलेशनशिप इज बीइंग कंसीडर्ड। इज दैट ओके? इसको भी एक्सेल से बनाया जा सकता है। सो वी हैव अ नंबर, इसमें आप देखिए हर जगह कंपैरिजन किसका है, fit and null ka. Fit means the model that you have proposed, right? You have fitted the model. We have number of indices. The first one is a normed fit index. We have Tucker-Lewis index. We have CFI also. हम तीनों को डिस्कस करते फिर हम बताएंगे कि व्हाट इज द इशू, मतलब विच वन शुड बी यूज। नॉर्म फिट इंडेक्स इज दिस वन। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं यूज करी, राइट। सो इट इज अफेक्टेड बाय मॉडल कॉम्प्लेक्स। अगर मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा तो अपने आप हमको ये फिट इंडिसेस अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। इज दैट ओके? सो वी मूव टू द टकर लुइस इंडेक्स। इसमें बेटर, इट इज बेटर देन द फर्स्ट वन, राइट। लेकिन इसमें इशू क्या है, इट इज नॉट नॉर्म एज सच, सो इट मे बी लेस देन जीरो, नेगेटिव भी आ सकता है, इट मे बी ग्रेटर देन वन ऑल्सो। जैसा कि आपको, आपने दो तरह का आपने पढ़ा था ना, सूडो आर स्क्वायर पढ़ा था, याद आया किसी को? लॉजिस्टिक में देर आर टू, वन इज कॉक्स एंड स्नेल, अदर इज नगेल करके, उसमें भी तो एक इशू था कि वन इज नॉर्म, अदर इज नॉट नॉर्म। नॉट नॉर्म का मतलब है वैल्यू जीरो से भी छोटी हो सकती है, वैल्यूज कैन बी ग्रेटर देन वन ऑल्सो। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग नॉर्म किस पे करते हैं, इसको नॉर्म करते हैं। सो आपको भी लॉजिकल हो गया होगा कि बेस्ट कौन सा है, CFI। CFI is, देखिए here we have both, we have improvement over NF5, ये हमने norm भी किया गया है, and we have included the degrees of freedom also, means we have incorporated the complexity also। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फॉर्मूला why have written the formula कि जो चीज हम बोल रहे हैं वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको रटना ना पड़े। Here we don't have any degrees of freedom, so obviously complexity may have some impact। It has included the degrees of freedom as well as norming is there, so this is the best way। Okay, again this is this represent the improvement, so we should have a high value, right? Strict says में this value should be greater than 0.909 0.95, but हम लोग काम चला सकते हैं if it is greater than 0.96। Is that okay? आपने इसका फोटो कर लिया? ओके, हम आपको तीनों वैल्यूज दिखा देते हैं, बट इन द इंटरप्रिटेशन वी विल बी यूजिंग CFI only। ओके,
ओके, तो दिस इज आवर डिजायर्ड। यहाँ पे आप क्लिक भी करेंगे तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा इस समय। अभी बड़ा हो रहा है, अदरवाइज इस पे आपको इंटरप्रिटेशन मिल जाता है एनीवे। So this is the baseline comparison. Baseline comparison means comparison with respect to null model, right? So यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। You will be getting NFI, you will be getting Tucker-Lewis index, PLI, and finally you will be getting CFI. आपको तीनों चीजें दिख रही हैं। तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वैल्यू इज 0.987 ग्रेटर देन 0.95, सेकेंड वैल्यू इज 0.992 ग्रेटर देन 0.95। आप इन दोनों को इंटरप्रेट ना करना चाहें तो इवन देन CFI इज राइट ग्रेटर देन 0.9। इज दैट ओके? राइट, इट मींस द प्रपोज्ड मॉडल is an improvement over the baseline model. Okay, so there is an increment. Yes, yes, देखिए इसमें एक क्या है, जैसे डिफॉल्ट मॉडल है सैचुरेटेड मॉडल। सैचुरेटेड मॉडल में हर तरह की रिलेशनशिप कंसीडर कर देगी, हर के बीच। सैचुरेटेड आपको याद करिए, हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग तो खरीद के भी लाते थे और टेस्ट भी करते थे। कॉपर सल्फेट होता था, राइट, जो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल आपको दिखाया भी गया था। यू कैन गो ऑन डिजोल्विंग, थोड़ी देर बाद डिजोल्व होना क्या हो जाता था, राइट। इसका मतलब है कि जितना स्पेस होता था लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, वो फिलअप हो जाता था बिकॉज ऑफ द कॉपर एंड सल्फेट, राइट। तो सेम चीज है कि सैचुरेटेड मॉडल मींस वेयर ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, हर के बीच में रिलेशनशिप ले लेते। ओके, सो इट इज जस्ट टू शो कि वो क्या वैल्यू आ रही है। बेसिकली डिफॉल्ट मॉडल इज द मॉडल दैट वी आर। इंडिपेंडेंस मॉडल मींस आपने कुछ नहीं किया, सबको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, दैट इज द बेसलाइन मॉडल। सो दैट्स व्हाई ऑल द वैल्यूज आर 0 0। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर? So it means we have achieved that our model have incremental fit also. Okay. So जब भी आप आउटपुट लिखेंगे, फर्स्ट यू राइट, मेन हेडिंग तो वही डालेंगे, यू आर एग्जामिनिंग गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल। फर्स्ट यू विल डिस्कस एब्सोल्यूट फिट इंडेक्स, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंटल फिट इंडेक्स। ऑब्वियसली यू विल पुट द वैल्यू उसका, और उसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे, योर मॉडल इज ए गुड, योर मॉडल इज एन शोइंग एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बेसलाइन मॉडल। ओके, डन, क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं, वेयर वी कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल। ठीक, आपको याद रखना है कि वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑकम रेजर, ऑलवेज सिंपल इज ऑलवेज द बेटर। ओके, अब हम आपसे पूछते हैं सिंपल का मतलब क्या होगा। ओके, अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे। सिंपल मीन्स लेस कॉम्प्लेक्स। किस मॉडल को कॉम्प्लेक्स कहते हैं? यस, एनीवन, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप भी बोल सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एजम्पशंस। ओके, तो ये जो एजम्पशंस लिए गए थे, ये एजम्पशंस किसके रिलेशन में लिए जाते हैं इस मॉडल में? रिलेटेड टू दिस, थ्रू assumption means hypothesized value, right? इसका मतलब दिस assumptions actually are the hypothesis, जो कहां से लेकर के आ रहे हैं हम लोग, लिटरेचर रिव्यू से आ रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स मॉडल मीन्स देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ रिलेशनशिप, लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट, लार्ज नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ये सब लार्ज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, मीन्स नंबर ऑफ L1 LX1 LX2 terms are will be higher, right? Since we have using a large number of construct and large number of indicators, so even E2 terms would be higher. होंगे कि नहीं होंगे? Means in the complex model related to a simple model, these LX terms are the beta terms, or the path coefficient terms would be higher, and these error terms would be higher. Obviously they are unknown, they are to be estimated. ठीक, estimate करने का मतलब है degrees of freedom क्या हो जाए, कम। So degrees of freedom of a simple model would be high, and degrees of freedom for a complex model would be low. Is that okay? Degrees of freedom में आपने देखा था क्या होता है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल,
जो आपको उससे मिलता है कितने यूनिक टर्म्स हैं और कितनी इंफॉर्मेशन आपने यूज की है. दिस रेशियो इज नोन एज पार्सिमनी रेशियो. इज दैट ओके? राइट. सो दिस पार्सिमनी एक्चुअली रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल. जैसे हमने लिखा है, विच मॉडल अमंग द कॉम्पिटिटिव मॉडल इज बेस्ट. ठीक. बेस्ट का मतलब क्या है? इट इज अ फिट रिलेटिव टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. ऑब्वियसली अगर मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा तो फिटनेस के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे. मॉडल सिंपल होगा तो फिटनेस के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे. तो हमको खाली फिटनेस पे नहीं जाना, हमको किस पे जाना है? वी शुड प्रपोज द सिंपलर मॉडल. राइट. सो फॉर दैट पर्पस वी कैलकुलेट द पार्सिमनी रेशियो. पार्सिमनी रेशियो क्या है? रेशियोज ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज का मतलब क्या? कहां से यूज होंगे? इन एस्टिमेशन. राइट. इन एस्टिमेशन का मतलब क्या चीज एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग? वी आर एस्टिमेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी to the degrees of freedom that are available. This is known as parsimony, right? It is representing the model complexity, right? So these are the certain measures like adjusted goodness of fit. आप देख रहे हैं parsimony ratio से multiply किया गया है. Parsimony norm fit index NFI को multiply किया गया है, right? So these are the measures. Again, these values should be high. ऐसा हम लोग ये नहीं कहते 0.9 से ज्यादा होना चाहिए. Whenever we have some alternative models, हम कंपेयर कर लेते हैं कि किसका पार्सिमनी फिट इंडेक्स बेटर है एंड वी एक्सेप्ट दैट मॉडल. लेकिन रिलेटिवली हाई होगा उसी को तो बेटर माना जाए. इज दैट ओके? सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग AGFI एंड PNFI. राइट. फाइन. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? थोड़ा टफ होगा लेकिन हम लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे बिकॉज दिस आर द स्टैंडर्ड मेजर. हर जगह यही यूज होंगे. ठीक. सो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है डायग्राम बनाने की, और कुछ और इश्यूज है वो हम लोग कल और परसों करते चलेंगे. इसीलिए इसको 3 दिन रखा है सो दैट एवरीवन शुड बी कंफर्टेबल विद दिस. इसको लास्ट यही डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज द पार्सिमनी फिट इंडेक्स. इट इज देयर. ओके. वैल्यूज कितनी है? PNFI is 0.658. PCFI is, sorry, AGFI ऊपर आपको मिलेगा. AGFI is 0.931. Okay, आपको मिला. So AGFI is giving a good value and PNFI is giving us a moderate value. Right? तो आप सिर्फ आपको भी बताने के लिए किया because there is no alternative model, so we are not. और इसमें मिक्स टाइप के सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मतलब एक्चुअली था भी बहुत छोटा सा ही. देयर आर 3 कंस्ट्रक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप ले ली और रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल. तो दैट इज नॉट एज सच अ सिंपल मॉडल क्योंकि चीजें ही छोटी हैं. क्योंकि देयर आर जस्ट 3 कंस्ट्रक्ट एंड जस्ट 9 इंडिकेटर्स. उससे ज्यादा भी कुछ नहीं हो सकता तो उससे कम भी कुछ नहीं हो सकता. तो एज सच अभी इतना आपको नहीं हो रहा है. व्हेन यू कंसीडर अ बिगर मॉडल तब इसका इंपॉर्टेंस और समझ में आएगा. Anyway, I have shown you the values and these are the values. Okay. Again, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. नहीं? अभी तक हम लोगों ने खाली फिट इंडिसेस डिस्कस करा. ठीक. अभी हम लोगों ने कोफिशिएंट्स नहीं डिस्कस करे. सो डन फॉर डे कि और करना है? बहुत हैवी हो गया. आप लोगों ने कुछ नोट किया होगा. वी आर रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. राइट. तो ये नोट्स भी हम आपको मतलब साथ साथ इसमें आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे. ठीक. क्योंकि दीज आर द मेजर्स जो हर जगह यूज हो गए. बस एक एस्पेक्ट बचा हुआ है जहां पे हम लोग अभी तक हम लोगों ने वैल्यूज नहीं डिस्कस करी. जैसे आपने देखा था हम लोगों ने लिखा था LX1 LX2. तो दीज आर द पाथ कोफिशिएंट और द रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस करे हैं. तो दैट कम्स अंडर एस्टिमेट. तो कल हम पहले उसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल रन द स्ट्रक्चर मॉडल ऑन दिस डेटा सेट ऑल. राइट. उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ये हम लोग अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे अप टू द
नॉट अप टू द एंड, अप टू स्ट्रक्चर मॉडल ओनली, मीडिएशन मॉडरेशन बाद में रखेंगे. Then we will be using H-bat case. So first we discuss the H-bat diagram, then we will be running that. So आप लोग एक बार H-bat case रिपीट कर लीजिएगा कि क्या क्या हाइपोथेसिस है. नंबर 1, उसमें एक्सोजेनस कौन सा है, इंडोजेनस कौन सा है. नंबर 2, आप लोग अगर अपने पास सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर भी आ जाइएगा, 10 बजे से या 9:30 से लैब्स खुल जाती है. एक बार आप जरूर से यू शुड ड्रॉ द डायग्राम फॉर द टाइम, CFA डायग्राम एज वेल एज द स्ट्रक्चरल मॉडल डायग्राम. एक बार रन कर लेंगे, यू विल, इफ यू गेट द आउटपुट तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा. ओके, थैंक यू.